टायमा भितर तुमी इनिंग जे आसा सोंपोवचे आसा. So now it's start for this second semi-finals with umpire signal. So here we go. Sarvesh Kunkalkar the bowler. Tushar Sawant at the striker's end. Ashwin Naik alias Munna at the non-striker's end. Two openers for Curchorem. That's a lovely delivery. Tushar Sawant could not do much. And that's an early breakthrough provided by Sarvesh Kunkalkar. So 0 for the loss of 1 wicket. Wonderful start for Veling cricketers. Sarvesh Kunkalkar providing the early breakthrough. Breaks the shackle, disrupts the terms. And that's the first wicket back to the pavilion. So Curchorem Warriors have to really work very hard to post a decent total. This is the big game of semi-finals. And a lot depends on this pair. The fate of the match depends on this pair. So from here on, really, they have to bat at least for 10 to 15 overs so that the later batters will get a big platform to explode in the depth of the innings. Meanwhile, there's an inclusion in the Veling cricketers playing 11. There's a Darshan Misal who is playing today. So one of the best prospect. And this is the first free hit taken by Vikas Desai. He is meanwhile a big swing and it is a wide. So now with this, Curchorem Warriors open their count. So the free hit will continue as Vikas Desai opted for that free hit in hunt of aiming that guideline. Bowler delivers it way outside the off stump. So 1 on the card. Meanwhile, there's a connection, but only to connect to the captain. And looks to be the willow is broken with that as the ball has hit the toe end of the bat. Definitely, there will be change of willow for Vikas Desai. So the free hit, there was a lucky escape for Sarvesh Kunkalkar. So now this is one of the better willows that have been taken inside the ground for Vikas Desai. One of the personal willow of Balkrishna Odadkar. Have checked it personally, and that is the wonderful bat that have been replaced. So Vikas Desai, let's see whether this new willow brings some form for the captain of Curchorem Warriors as he is at the striker's end. Tushar Sawant back to the pavilion without even opening the account. And now captain at the striker's end.
Meanwhile, plays watchfully straight down the ground towards the mid-on region. Meanwhile, the fielder was at the circle that allows both the batters to take a single. A convincing single from the bat of Vikas Desai. So with that, captain opens account for himself, and now his partner Ashwin Naik, another good prospect, plays his natural game, is at the striker's end. Leaves the ball as he has sensed it. This is going to be a wide, and yes, the guess is correct. So wide takes the team total furthermore to 3. Meanwhile, a fuller delivery, change in pace. Ashwin not in a mood to play that as it was slightly wider. So good bowling continues from Sarvesh Kunkulkar. Meanwhile, a lovely flick of wrist. Ball goes away from the fielder. Is it going to be 5 runs for the team? And that is a boundary. Wonderful strike from Ashwin. Waiting for the opportunity. Ball was drifted onto the legs, and a delicate touch that makes the ball to travel the distance quite comfortably. So boundary takes the team total to 7. Out in the middle, and definitely he will be guiding Ashwin as how to carry on from here on. This is a crucial partnership that may look little slow at the moment, but once they are set, and definitely they will be looking to get every run possible. Now another good pacer, Tanvesh Gowde from Martikaden. So very short run up, almost like a tennis ball player, but he's very deceptive with his bowling. So let's see how the day of Friday goes for Tanvesh Gowde, because this is at the striker's end. Another good delivery, equally well played. Vikas has a lot of experience and knows how to take the team out of the trouble. Such is the caliber of this guy right now at the striker's end. So starts with a dot delivery. Fuller pace right from the middle of the willow, but straight to the mid fielder. So no chance of a run as a ball has gone like a tracer bullet. Perfectly timed right from the sweetest part of the bat. Lovely delicate touch onto the legs, and ball disappears out of the boundary rope. Second boundary for Curchorem Warriors into the second over, and this time it's from the bat of Vikas Desai, the captain, leading from the front. With that, team total moves to 11. Second over in progress. Power play over is on. So 2 fielders can be plotted outside the 30-yard circle. And that's a mistake that have been done by Tanvesh Gowde as he drifts onto the pads. And that is very easy for Vikas Desai to rotate. Another fuller pitch delivery, ball goes towards the point region. Amit Amsekar, the fielder, fields the ball quite comfortably. So good bowling continues. Only one ball that was pitched at the pad line, and it goes for a boundary. Short pitch delivery, ball has been struck over the mid-wicket region. Ball goes towards the boundary. Is it going to be a boundary? Fielder after the ball stops the ball inside the boundary rope. Meanwhile, couple of runs. That was not timed well. Looks to be slightly up on the bat.
And that's the reason the ball was going much slower towards the boundary. That gives little time for the fielder to grab it. Full up is there. Look at that strike. What a hit. Monstrous from Vikas Desai. What a hit over the bowler's head, waiting for that delivery to be pitched fuller and taking the optimum advantage of that. With that, team total moves to 19. So finally, Curchorem Warriors are back on the track. 2 overs, 19 for the loss of 1 wicket. So definitely now some word of advice for his junior partner Ashwin, who will be at the striker's end. So that wonderful strike has taken the ball out of the ground. And looks to be it has been in the muddy area. So the new ball has been replaced. So that was a wonderful straight strike right from the middle of the bat, and the ball disappears out of the ground. Just the perfect timing to take that ball out for a big 6. So now the third over and the final compulsory power play over will be bowled by Sarvesh Kunkolkar from railway station end. Ashwin at the striker's end. Again a cut shot. Equally well fielded by the captain of a Goa Ranji team, Darshan Misal, patrolling the backward point region. Meanwhile, the match ball has been retrieved, but you have to look at that ball. Must be dipped in that muddy area, and it will be put out of the ground. Again a lovely delivery ball going slightly away from the batter. A hint of meanwhile, just guides the ball towards the fine leg as a no fielder was kept over there, and that is a welcome boundary. With that boundary, team total moves to 23. So Ashwin Naik has got his eyes right on the ball, waiting for the ball to come to him, close to him, and they're just guiding it with the blade that he's holding at the moment in his hand. Perfect willow, and that is the second boundary for Ashwin Naik. Again, delicate touch. Ball goes towards the third man region. Fielder intact. Will be just a single. This is a wonderful approach. As a boundary has come, takes a single to rotate the strike, and that brings the captain Vikas Desai at the striker's end, who looks to be confident. Wonderful strike from his bat straight over the bowler's head in the previous over. And with that, now team total moves to 24. Again, very well delivered, shot of length, straight wicket to wicket. Equally well played by Vikas Desai. Again, a ball was pitched little short. The height is the concern, and look at the expression of Vikas Desai. Normally, he doesn't express much. Was a scoring opportunity, has been missed. Nonetheless, the final delivery goes as a dot delivery. So after completion of 3 overs, exactly going at the run rate of 8 runs per over, it's 24 for the loss of 1 wicket.
as the power play concluded. So Darshan missile has been brought from the multi-cut end. So let's see how the match carries from here on, as he is a very shrewd bowler, the captain of Goa Ranji team, giving his services for Veling cricketers at the moment, and even is captain of MCC, who have qualified for the GPL, that is Goa Premier League finals, that is going to be played from tomorrow. So it is going to be full up his delivery, equally well played, and good work from Darshan on his follow through. Keeps the single away. So starts with a dot delivery. Another quick delivery, equally well played. So Darshan Vishal is not going to give free buys at the moment. So wonderfully played by Ashwin Naik. Full pitch, missed by the keeper, and that allows both the batter to take a single. So with this single in form of buys, team total moves to 25. And now Vikas Desai is at the striker's end. So this is going to be a wonderful contest, as Darshan is up against Vikas. Full toss to deliver, equally well timed, straight towards the long on region. And that allows both the batters to take a single. So far, dealing in singles, it's a wonderful strategy, giving respect to the batter bowlers, waiting for the odd ones to strike them out. 26 on the card. Meanwhile, a big swing from Ashwin Naik, aiming to get some runs, and his foot is right inside the crease. So no hesitation from umpire Ajit Shirodkar to declare it not out. So definitely, if the ball is been pitched little fuller, then any batter will aiming to go after the ball. So a positive thinking from the batters. Meanwhile, plays back to the bowler, a drop to reach, and that is a wonderful over considered by Darshan Vishal. So after completion of 4, it's 26 for the loss of 1 wicket. Meanwhile, guys, the ball, oh my dear. That was a easy chance, missed by the fielder. Looks to be not alert. This is why you have to be very alert in the match. You can't drop the catches of the player like Vikas Desai. So let's see how much does it cost for the fielding team. Definitely the captain have had a heart in his mouth. And now Vikas Desai decides to take the second free hit. That was a scoring opportunity, not from the middle of the bat. That's why it went a little slower to the fielder. Otherwise, that would have raced quickly towards the boundary. So let's see what is going to happen on this free hit. Meanwhile, a big swing. Ball goes towards the third man region. Slight deviation, but equally well fielded by the fielder. So Sarvesh Kunkulkar gets a read of the free hit, just a single from it.
Score moves to 27, and now Ashwin at the striker's end. Meanwhile, a big swing, but the ball has been pitched way outside the off-stump. Stretch of arms by the min umpire Ajit Shirodkar declares it a wide, and that will release some pressure off the batters. 28 on the card. Fifth over in progress. 28 on the card. Again down the leg, some wonderful work by wicketkeeper. Otherwise, that would have been another boundary. So meanwhile, wide is the signal, so couple of runs. That takes the team total to 30. And eventually, it brings Vikas Desai at the striker's end. Meanwhile, another attempt. Fielder stays safe. And even Pritesh is not happy with the effort. He knows the importance of this wicket. Want his fielders to get charged. He won't mind if even it is a risky. They have to take their chances. That's a call from Pritesh. So meanwhile, Ashwin at the striker's end. Meanwhile, a wonderful strike, and it goes like a tracer bullet. Stand and deliver. What a strike. Ashwin doing the job for his captain to release the pressure from this over. And that boundary takes the team total to 35. So a decent start now. Can Ashwin get one more? That will be the story to see. Meanwhile, a wonderful boundary to the covers. No chance for any fielder. Ashwin doing the wonderful job. Again, a good delivery. Ball kicking off the deck. Travels immensely towards the keeper. So wonderful start. Even they have lost the wicket on the very first delivery. This is a wonderful start, we must say, by Ashwin and Vikas Desai. A partnership is happening and it should continue. Meanwhile, ball takes the inner edge. Was little short from the wicketkeeper, but wonderful effort to stop that ball from crossing himself, and a dot ball to end over number 5. So now going exactly at the run rate of 7 runs per over. It's 35 for the loss of 1 wicket after the completion of 5 overs. Meanwhile, there will be a change in the commentary, and over to Sanket Gaonkar. पांच ओवरों का खेल यहाँ पर हुआ समाप्त 35 लग चुके बोर्ड पर। और यहाँ पर दर्शन मिसाल दूसरी ओवर यहाँ पर करते हुए, और यहाँ पर जानते हैं कि एक पार्टनरशिप यहाँ पर बनी है पहली विकेट पहले गेंद पर। उसके बाद ये बढ़िया पार्टनरशिप दोनों की। ओ यहाँ पर जरूर गई थर्डमैन के तरफ गेंद, और भाई का इशारा था। वह क्या ही गेंद है, बहुत ही बढ़िया, और सम्मान देना चाहते हैं। एक बड़े बॉलर, एक बढ़िया बॉलर और बढ़िया ऑलराउंडर कप्तान है। लेकिन इस बार बड़ी स्विंग, लेकिन मिस। अश्विन और विकास दोनों की ये बढ़िया साझेदारी यहाँ पर पनपते हुए 36 रन हो चुके हैं। छठी ओवर है प्रगति पर, और
बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश थी लेकिन मिस बीट हुए। तो इस ओवर ये बढ़िया ओवर यहाँ पर घट्टा हुआ और जानते हैं कि ये ओवर जो है इस ओवर में यहाँ पर विकेट नहीं देनी है। फिर एक बार बढ़िया गेंद उसी के साथ ये बढ़िया ओवर और 22 के रूप में एक रन इस ओवर में जरूर आया। इसके बाद जो गेंदे सटीक लाइन और लेन के साथ छठी ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 36 लग चुके बोर्ड पर एक विकेट के नुकसान के बाद। सैयद बद्दी चौथे बॉलर का इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए कप्तान और एग्जैक्टली 6 रन प्रति ओवर की रफ्तार से यहाँ पर आगे बढ़ रही है कुरचरेम वॉरियर्स। हालांकि थोड़ी सी धीमी शुरुआत जरूर है लेकिन खुशी की बात विकेट्स 9 अभी भी हाथ में और कभी भी यहाँ पर अपना गियर शिफ्ट कर सकते हैं और सक्षम है दोनों ही बल्लेबाज अश्विन और विकास। तो अब तक ये बढ़िया संभल कर खेले हैं और 6 ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद 36 लग चुके बोर्ड पर। पहली गेंद यहाँ पर थर्ड में दिशा में रुक करती हो रही है और फील्डर जरूर बॉल के पीछे देखते हैं कितने रन यहाँ पर और ये यहाँ पर बॉल की जीत होती हुई और चौका आता हुआ सैयद बद्दी। हालांकि ऐसे शुरुआत यहाँ पर नहीं चाहेंगे कि पहली गेंद पर चौका है लेकिन विकास देसाई यहाँ पर अपसेट हो चुके हैं और ये गेंद लीडिंग है जरूर ली चौका जरूर आया लेकिन बहुत देर बाद ये चौका जुड़ता हुआ टोटल में और 40 इस चौके को जोड़कर हुआ कुल स्कोर। फिर एक बार बैकफुट पर जाकर शॉर्ट कवर का खिलाड़ी मौजूद और यहां पर मौका रन आउट का। अगर डायरेक्ट हिट होती लगती तो जरूर एक मौका जरूर बन सकता था। तो परेशान वहां पर चाहते थे कि डायरेक्ट हिट वहां पर हमें धामशेखर बढ़िया फील्डिंग और थ्रो भी हालांकि बढ़िया लगाया था लेकिन विकेटों पर निशाना नहीं साध पाए। 41 रन को जोड़कर हुआ कुल स्कोर और बहुत बड़ा स्विंग लेकिन मिस थोड़ी सी नीचे रही पड़कर गेंद। तो संभल कर खेलना होगा जो पार्टनरशिप अब तक रही दोनों की यहाँ पर उसे आगे बढ़ानी है और विकेट का पतन यहाँ पर बैकफुट पर ला सकता है कुरचरेम वॉरियर्स को। अभी भी दोनों में अच्छी सूझबूझ बढ़िया तालमेल और दोनों के बीच 41 रनों की पार्टनरशिप अब तक हो चुकी है। हवा में गेंद और ये आसान यहां पर कप्तान वहां पर खड़े थे और सीधे पॉइंट की दिशा में पहले दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर। तो अब तक बढ़िया ये पारी रही थी बढ़िया संभल कर खेल रहे थे लेकिन इस बार अश्विन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके और दूसरा झटका लगता हुआ इस 41 के स्कोर पर। अश्विन नायक का 13 रन बनाकर वापस पिछली गेंद पर और सैयद बद्दी को यहां पर ब्रेक तो मिलता हुआ दूसरा झटका लगा इस पिछली गेंद पर। उसके बाद आउट स्टेशन प्लेयर दीपराज गांवकर उतरे हैं मैदान पर। काफी कुछ निर्भर है यहां पर दीपराज को एक अच्छी पारी यहां पर खेलनी होगी जो टीम
थोड़ी सी बैकफुट पर है, 2 विकेट अब तक गिर चुके हैं और थोड़ी सी धीमी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। उसी की बदौलत एक पार्टनरशिप और एक 4-5 ओवर यहाँ पर संभल कर खेलना हो। उसके बाद सक्षम दोनों ही खिलाड़ी और पहले ही गेंद पर फ्री हिट यहाँ पर लेना चाहते हैं। तीसरा फ्री हिट यहाँ पर लेना चाहते हैं बल्लेबाज। अभी अभी उतरे मैदान पर दीपराज गांवकर। बढ़िया ये शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कनेक्शन बढ़िया, वन बाउंस फील्डर के पास और ये फ्री हिट यहाँ पर केवल 1 ही रन मिलता हुआ। तो बल्लेबाज चाहते हैं कि फ्री हिट जब लेते हैं तो एक चौका या छक्का उस फ्री हिट पर आए। जो इस बार बैटफुट ओवर पंच किया और डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। सफल ओवर की यहाँ पर समाप्ति होती है। सैयद बद्दी को मिलता हुआ 1 विकेट, अश्विन को यहाँ पर वापस भेजा। उसी के साथ 7 ओवरों का खेल होता हुआ समाप्त। 43 लग चुके बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान के बाद। जिस तरह की यहाँ पर बैटिंग लाइनअप है वेलिंग क्रिकेटर के पास, एक बड़ा स्कोर, एक बड़ा बड़ा टोटल यहाँ पर लगाना होगा बोर्ड पर। तो एक 170 180 के यहाँ पर करीब जाना होगा तो एक बढ़िया मैच यहाँ पर बन सकती है। प्रीतेश नाइक का नई बॉलर, 8वीं ओवर की यहाँ पर करेंगे शुरुआत। बढ़िया गेंद, कल भी देखा था कि एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, 3 विकेट अपने नाम किए थे। जो मैच हाथ से थोड़ा सा फिसल रहा था उसे वापस भेजने में प्रीतेश की बहुत ही बढ़िया। इस बार फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे, अपील जरूर हुई है, रन लेना यहाँ पर चाहते थे और बढ़िया कॉलिंग और ये रन यहाँ पर होता हुआ कंप्लीट। 44 इसे रन को जोड़कर हुआ है कुल स्कोर। इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 ही रन यहाँ पर मिलेगा। 1 ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट और ये बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है। प्रीतेश कल जिस तरह से यहाँ पर बॉलिंग की थी वही बरकरार, वही फॉर्म, वही लाइन और लेंथ के साथ इस मैच में भी बहुत ही बढ़िया अब तक रही है बॉलिंग प्रीतेश नाइक की। यहाँ पर एक मौका, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर 6 रन पूरे इस गेंद पर मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया, पहले ही पढ़ा था कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है। अब तक बढ़िया कमाल की गेंदें की थी लेकिन इस बार थोड़े से दिशा से भटके और आसान मौका था यहाँ पर और इसी का फायदा उठाकर और एक चौका जड़ दिया यहाँ पर छक्का। 51 इसी के साथ 50 का आंकड़ा यहाँ पर छू लिया है कुरचोरेम वॉरियर्स ने। इस बार यहां पर अपील जरूर हुई है लेकिन असर नहीं अंपायर पर, नकारा इस अपील को। तो दो महान बल्लेबाज, दो महत्वपूर्ण बल्लेबाज कुरचोरेम वॉरियर्स के लिए वहां पर मैदान पर डटे हुए हैं, विकास और दीपराज।
फिर एक बार हल्के हाथों से खेला। जानते हैं कि इस ओवर में छक्का जीत के अच्छे रन मिल चुके हैं और यहाँ पर विकेट नहीं देना चाहते। उसी के साथ 8 ओवरों का खेल होता हुआ समाप्त। 51 लग चुके हैं बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान के बाद। बैकफुट पर जाकर बढ़िया शॉट, प्रोटेक्शन मौजूद डीप में। एक ही रन यहाँ पर मिलेगा और पिछली गेंद पर एक बहुत ही बढ़िया प्रहार, बहुत ही बढ़िया छक्का जीत किया था विकास देसाई। तो इस बार एक रन दीपराज गांवकर के बल्ले से और स्ट्राइक का वापस दी अपने पार्टनर विकास को। बिगफुट में जाकर वहां पर गैप, जी नहीं, फील्डर मौजूद। हो इस पर हवा में गेंद, देखते हैं फील्डर बॉल के नीचे जरूर और तीसरा झटका यहां पर लगता हुआ। दीपराज घावकर यहां पर एक बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन इस बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके। हवा में जरूर रही गेंद और उसी के बदौलत यहां पर तीसरा झटका लगता हुआ। दीपराज घावकर केवल 3 ही रन बना पाए और सैयद बद्दी के शिकार बने। तो सैयद बद्दी की दूसरी ओवर, 2 ओवरों में 2 विकेट अपने नाम अब तक करने में कामयाबी मिली है सैयद बद्दी को। दीपराज गांवकर के बाद सोमेश प्रभुदेसाई उतरे हैं मैदान पर और एक छोर पर विकास देसाई डटे हुए हैं और दूसरी छोर पर हमारा लगातार विकेटों का पतन। साथ देना होगा यहाँ पर जो बल्लेबाज। फ्री हिट, चौथा फ्री हिट सोमेश प्रभुदेसाई पहली गेंद पर फ्री हिट के साथ शुरुआत करना चाहते हैं और ये करारा शॉट। इस फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए पहली गेंद फेस कर रहे थे, कॉन्फिडेंस यहां पर बिल्ड करने के लिए पहली गेंद पर फ्री हिट लिया और बड़ा प्रहार सैयद बद्दी जो अब तक की बढ़िया यहां पर गेंदे कर रहे थे, बढ़िया बॉलिंग हो रही थी, लेकिन इस बार सोमेश अभी अभी उतरे हैं मैदान पर और उसी के साथ ये छक्का यहां पर आता हुआ वेलकम बाउंड्री और इसी के साथ 59 पर पहुंच चुका स्कोर। पिछला जो शॉट लगा था, ताकत इतनी शॉट में कि बॉल गुम हो गया और दूसरा बॉल मंगवाया गया और अंपायर यहाँ पर दूसरा बॉल चेक करेंगे।
तो नए बल्लेबाज उतरे मैदान पर सोमेश, और सोमेश ने फ्री हिट लिया और एक फ्री हिट यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो छक्का और पांचवा फ्री हिट, आखिरी फ्री हिट इस इनिंग का। ओ इस बार बड़ा स्विंग, लेकिन इस बार बढ़िया ये गेंद, क्विकर डिलीवरी, और इसके साथ ये फ्री हिट यहाँ पर ज्यादा कुछ असर नहीं कर सका। पिछली गेंद पर फ्री हिट पर एक छक्का जरूर लगा। फिफ्टी 59 हो चुका है कुल स्कोर, 90 हो रहे प्रगति पर। इस बार फुल टॉस, हालांकि डिलीवरी की जरूरत थी, वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद। दर्शन मिसाल एक रन, और इसी के साथ यहाँ पर 9 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 60 लग चुके बोर्ड पर 3 विकेटों के नुकसान के बाद। यहाँ पर शुरुआत की थी आज की इनिंग की तुषार सावंत, और उसके अश्विन नाइक का पहली गेंद पर यहाँ पर वापस भेजा था तुषार सावंत को। इसके बाद विकास देसाई वन डाउन उतरे थे, अभी भी यहाँ पर डटे हुए एक छोर पर। यहाँ पर एक रन जरूर मिलेगा। 10वीं ओवर की शुरुआत यहाँ पर की है फिर एक बार प्रीतेश नाइक का, जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है। इस बार हल्के हाथों से खेला, और बढ़िया और सटीक लाइन और लेंथ, जिस तरीके से कल से हम देख रहे हैं कि एक जो टप्पा या जो लाइन इसका इस्तेमाल अब तक किए है प्रीतेश नाइक। ये यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, और यहाँ पर पूरा फायदा उठाते हुए वन बाउंस चौके के लिए। तो अब तक कमाल की गेंद रही थी, लेकिन इस बार पिछली के ओवर में भी देखा था कि एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, उस पर बड़ा प्रहार किया था विकास देसाई ने, और इस ओवर में भी एक मौका यहाँ पर मिला हाथ खोलने का, और पूरा फायदा उठाकर इस गेंद पर किया चौका और जीत। ओ फिर एक बार यहाँ पर पीलू और गुगली उठती हुई, चौथा झटका यहाँ पर लगता हुआ। विकास देसाई अब तक यहाँ पर डटे हुए थे, बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार आउट होकर वापस। 33 रन बनाए विकास ने। पिछली गेंद थोड़ी सी किक थी प्रीतेश की, लेग बिफोर विकेट पाए गए, और उसी के साथ थोड़े से बैकफुट में यहाँ पर कुरचरेम वॉरियर्स 4 विकेट अब तक वापस जा चुके हैं। जो ऊपरी बल्लेबाज उसमें से सिर्फ विकास देसाई, जिन्होंने एक बढ़िया पारी खेली 33 रनों की, उसके व्यतिरिक्त एक भी बल्लेबाज यहाँ पर ज्यादा देर विकेटों पर टिक नहीं सके, और संजय नायक का एक एक्सक्लूसिव, एक बहुत ही होनहार ऑलराउंडर कुर्सरे वॉरियर्स की तरफ से कई सालों से खेलते आ रहे हैं, और यहाँ पर जिम्मेदारी होगी कि विकेट से भी बचाए और रन भी बनाए, क्योंकि एक बड़ा टोटल यहाँ पर चाहिए, और उस बड़े टोटल की ओर रुख करने के लिए यहाँ पर आक्रामकता भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जो विकेट्स लगातार अंतराल पर गिरते गए, उसी का प्रेशर थोड़ा सा रहेगा बल्लेबाजों पर।
ओह, यहाँ पर फिर एक बार क्विक डिलीवरी है संजय नाइक का, पहली गेंद फेस कर रहे हैं और थोड़ा सा समय ले सकते हैं यहाँ पर पिच को रीड करने के लिए, लेकिन इस पिच पर कई सालों से खेलते आ रही है, होम ग्राउंड। इस बार ये बढ़िया संपर्क, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑफ पर तैनात खिलाड़ी, और यहाँ पर इस रन के साथ संजय नाइक ने अपना खाता खोला और इसी के साथ 10 ओवरों का खेल यहाँ पर होता हुआ समाप्त। 66 लग चुके हैं बोर्ड पर 4 विकेटों के नुकसान के बाद, और आगे का हाल अंग्रेजी में सुनाने के लिए आपके सामने होंगे हमारे सीनियर कमेंटेटर हरीश काकोड़कर। So halfway past the first innings, Curchorem Warriors 66 for the loss of 4. And in comes the golden over. And it's the golden boy of Goa, the captain of Goa Ranji team, Darshan Misal. He has bowled his 2 overs for just 1 run, considered just a single. Surprising from the batters. They were struggled to get better against the ball. And in comes Darshan against Sanju. Oh, lovely ball. Lovely bowling here. Yeah, you can expect it from him. The man has represented how well was this Ranji season for this man. Played against all the top teams and performed excellently, not only with the ball, but also with the bat. This time played off the back foot, half stop here by the fielder. He's got a crucial 50, is a crucial wicket. Whenever Goa Ranji team required, and they had, I can certainly say it was one of the best seasons for Goa Ranji team. They could have been much better, but sometimes person like a Sagar Uddeshi, who is also played in the morning match for the semi-finals for Chino Dragons against Marudra Rising. Sagar Uddeshi got 10 wicket here in Porvorim itself. That match, Goa lost the points. That was quicker one. Nicely played off the back foot and very well fielded in the short third man region. So whenever the bowlers like Darshan Misal, left arm orthodox, bowling in the air, sometimes bowling the quicker ones. So this area becomes very important, the short third man point region. And maybe the extra cover as well. Going for the slog shot, missed here by the batsman, missed here by the keeper. So 4 byes, nothing on Darshan's name. He's bowling so well and the keeper has missed it altogether. Well, absolutely. No basics of cricket as far as the wicket keeping is concerned here. No feet movement. The ball turned. Nothing with the bounce. The bounce was absolutely perfect. Sometimes when you're not used to keeping against the caliber of maybe Sagar Uddeshi here, Darshan Misal, got a different caliber altogether, these bowlers. Toil in, toil out, day in, day out, to work hard on their fitness, to work hard on the line, the trajectory. Once again, here is a look at Darshan Misal, who is the captain of Goa Ranji team. How fast he finishes his overs. This is the standard you need to see and you need to follow up as well for all the other bowlers in this tournament. Just counting how fast he finished the previous over. The second over he finished in just 2 minutes. This over he just finished in 3 minutes.
This is way too wide. And mind you, when the overs are finished in 2 or 3 minutes, there are no wides, there are no extras. There have to be just 6 dot balls absolutely on the mutton. Nicely bowled. He's the man that changed the complexion in the previous game here for Veling cricketers. Pritesh Naik, very smart cricketer, very good bowler, very good batsman. Loves cricket to the core, treasures his wicket as a batsman, and also a good line and length. He likes to pick up good wickets in the opposition camp. So again, a good length, good line. Parth Chauhan, what an important wicket that was when he was taking the game single-handedly away from his team. Veling cricketers, 16th over he comes. There's a short ball, very nicely played. There is a man in the deep. Dash, fields up there and throws the ball back to the keeper. The start was good, but once the wickets are taken, especially of Vikas Desai, and suddenly you are rocked back. And a very loose shot there from Deepraj Gaonkar. He went after Syed Badi, and Syed Badi is having a wonderful time, not with the bat but with the ball. Sanguem cricketers is just liking it, taking important wickets, crucial wickets. So once again, lovely shot, should get boundary. Well, this is going to boost his confidence. It was fully pitched up and he was up to the task and just needed to find a gap. The timing is always there with Sanjay Naik. Too much fly, too much of width. An easy boundary. Don't count this Curchorem Warriors side out. They've got pretty deep batting. Once again trying to pay that shot. Little quick. The ball came onto it. Hurried on to him. And a single to finish this over. So once again, pretty good, decent, quick over here from Pritesh Naik as well. 3 overs, 22 for 1 wicket so far for him. And Syed Badi is the pick of the bowlers with 2 wickets for 16 runs. After completion of 12 is 91 for 4. So at the end of 12, the score is 91 for 4. Sanjay is playing at a strike rate of 100. And Somesh is playing on a 12 of just 9. So Rahul Prabhugaonkar comes into the bowl from the railway gate hand, and Sanjay Naik. So they need a partnership at this stage. Curchorem Warriors. Well, trying to go on the front foot and playing on the back foot after maybe a premeditated shot, thinking that the bowler is going to bowl a little fuller and I'm going to go on the front foot, and suddenly trying to play that cut shot. Not the right feet movement at this stage from Sanjay Naik.
Very nicely bowled. This was a little slower by the bowler. Played down towards the third man region. Important, the runs are flowing, runs are coming, ticking along. Maybe the idea is and was from the team management, the think tank of Curchorem Warriors, is to not give any wickets to Darshan Misal. Try to see him off. They try to go after the other bowlers. Veling cricketers, we have seen yesterday's quarter-final as well. Even the target was not much. Ahmed Damshekar played a crucial innings there of 46, awarded player of the match. But apart from him, none of the batsmen looked to be in that great touch. Maybe 15-20 more score yesterday. The result could have been something different. This time a hefty shot getting the hefty result. A big heave over the mid-wicket region, and he always looking to get the boundary. The fielder was a little squarer, and with these 4 runs, the score moves on to 96. So here is the replay on the screens. Just bowled wide outside. Nicely. This time he played it on the offside. Finds the gap. So finding the placement and finding the gap between both these fielders at point and third man region was the key, and he finds it to perfection. So back-to-back boundaries coming from the bat of Somesh Prabhu Desai, and 100 up here for Curchorem Warriors. 100 up in the 13th over. So the momentum has not been dropped here, in spite of wickets have been lost by Curchorem Warriors side. They know what sort of target is good enough for them on this wicket. This time nicely bowled. No width bowling wicket to wicket. So good over here for Curchorem Warriors, getting 2 boundaries in that over after end of 13 is 104 for 4. 100 for 4. Sayyad Badi. So bowling off spinners from round the wicket is definitely working for him. Trying to get the ball away from the right hander. And he's also bowling it slow in the air. Sometimes the quicker ones, sometimes slow. He's played so many matches and played at different levels in different places. Knows how to use the wicket and also the depth of the crease to the good effect.
You can see he's mixing it up well. He's mixing it very well. Sanjay Naik trying to play on the back foot. This was slightly quickish. Quick in the air, came fast, hurried on to the batsman. Very late onto that shot. So 3 dot balls from Syed Badi. And 4 dot balls here. 4 dot balls and almost the same ploy, the same line, the same length, the same trajectory. The result is also the same. Sanjay Naik is itching to get a single towards the point region. Once again, 5 dot balls. He's playing with the mind of Sanjay Naik. Sanjay Naik wants to play on the back foot. The balls are just skidding on away from the right-hander and is clueless at the moment out in the middle in the 14th over. Is it a maiden? It's a maiden over. And that is 14th over when both the batsmen were playing well. Just before this over, you felt that they are supposed to get at least 5 to 6 runs in this over. And here comes Syed Badi, bowls a maiden over. What a time he's having, what a ball he's having in this Sanguem Cricketers tournament. So after 14 is 100 for 4. So Veling cricketers are also giving it a good fight. They know very well they have to be in the race. They cannot allow this match and the total to be posted somewhere more than 150. 150 on this wicket. Although you cannot say it's a match-winning one, but it's definitely a competitive one with the bowling that Curchorem Warriors have. So 100 for the loss of 4 with 36 balls still left. At a current run rate of 7.1 for projected score of 143. And Curchorem Warriors will like to get somewhere around 155, 160 at this moment. I just saw Sagar Gosavi paired it up and he was a super sub. So 10 overs have been completed. So I just require which player has been super subbed here. So he is playing in place of Rajas Sawant as a super sub. So definitely services is required with the bat, the way he has padded up and put his grills on. And definitely later on in the second innings as well. This time nicely played towards the point region. In comes Tanvesh Gowde, who bowls with decent pace. And nippy bowler, nippy customer. So you need to get a hang out there. Sanjay Naik was struggling with his footwork throughout the innings, actually. And more so in the last over. Once again, this time a good shot. That is a man. Just needed to find that gap. Could not find. Going to be a single. So they have placed a square man inside. Short square leg and mid-wicket deep. Long on. This is the batting power play. That's a lovely shot. Uppercut. Just one bounce. Just inside. Lots of bat onto that from Somesh Prabhu Desai. And these are the runs that are required. They require some flurry of boundaries at this moment in this batting power play. It was short, it was wide. Wonderful cut shot, purposely played in the air.
This time once again, this is good batting, sensible batting here. This is a good length ball, and he knows I have to take a single. I think Sanjay will definitely do a good job. He can take the singles and give strike to Somesh, who is looking much more composed and steady on the wicket at the moment in this partnership. Trying to go for the shot, finds the gap. The ball is racing towards the fence, and Amit Amshekar gives it a wholehearted effort. But in return, the ball went towards 4 runs. He didn't time it that well, but still gets the 4 runs as the fielders are inside in this batting power play. Well, normally a permanent outstation player for Curchorem Warriors is giving a 200% effort for Veling cricketers. Nice to see. Whenever you are playing a good different side, you have to give effort for that side. That's what he's doing, Amit Amshekar. And this time, dot ball makes a good comeback, but definitely a good over here for Curchorem Warriors. 2 boundaries, one coming from the bat of Sanjay and second from Somesh. After the end of 15, it is 1-1 for the loss of 4. Some usual faces here as they always come to see a leather ball match or any cricket match in the crowd. And especially when the home team is playing, lots of local support here for Curchorem Warriors against Veling cricketers. So 1-1-1 for the loss of 4 is Nelson on the board. And 5 overs still left. 1 over of batting power play, which will be bowled here by Darshan Misal, and rightly so. So it's definitely not going to be the ball that is going to be pitched up here. He has placed 3 fielders in the deep mid-wicket region where Amit Amshekar is patrolling long on and long off. A normal set field here when 3 fielders are allowed outside. And Dash very well knows how to bowl in a situation like this. This is nicely played, wonderfully played shot. Using the pace of the bowler and sweeping it across the backward square leg region for 4 runs. This is sensible cricket, smart cricket. Don't need to go down the ground. The fielders are inside and he find the gap and also just the placement just towards the right hand side of the fielder. So in leather ball cricket, is sometimes you don't have to play the hard shots, the powerful shots. Timing also can do wonders. This is nicely bowled, stopped here off his own bowling by Darshan Misal. They don't want to risk also a wicket at this stage when they are going so well, especially against Darshan Misal. Oh, lovely bowling here, big appeal. Big appeal. Big appeal. Yes, here is the replay.
So now checking for stumping. The ball was in play, the ball was in action. So it's important now. We are waiting for the third umpire's decision here. First, there was an appeal for leg before wicket by Darshan Misal. And it's definitely going to be out. That was, I guess, because of that appeal, he lost the focus. He just did not see where the ball had gone, trying to go down the track. The keeper was alert, keeper was ready, and it was stumped. So that appeal distracted Sanjay Naik here, and the distraction got rid of his wicket. So a wicket has been taken by Darshan Misal in his last over, the fourth over that he's bowling. So far, 1 for 10 in 3.4. And in comes Sagar Gosavi. The man who was just in the commentary box 5 hours ago. Things were all going well for Curchorem Warriors. And just that, he goes out of the commentary box, then wickets kept falling, and immediately here to where his jerseys and the services for his Curchorem Warriors side. And here he is. Nice to see Sagar Gosavi on the field, coming as a super sub, replacing Rajat Sawant on strike for the first time. Oh, that's a lovely shot down the ground. Wonderful timing here for Sagar Gosavi. That's the why he is a highly rated cricketer. Oh, went for the second run. Miscommunication. Sagar had to be alert to come back at the non-striker's end. So 116 for the loss of 5 in the 16th over. Huh? So just a single to finish over number 16. 118 for the loss of 5. So last 4 overs left here. Last 4 overs, how much? So for the last 4 overs, I'll hand over the mic to Sanket Gavkar. एक सौ 19 एक रन को जोड़कर हुआ स्कोर। और सागर गोसावी बहुत दिनों बाद उतरे हैं मैदान पर, लेकिन कॉन्फिडेंस यहाँ पर पहला शॉट जो लगाया था बल्ले के बीचों बीच, इस बार बड़ा स्विंग, लेकिन यहाँ पर मिस। तो बहुत देर बाद यहाँ पर उतरे हैं, आसान नहीं होगा सागर गोसावी के लिए, लेकिन यहाँ पर दरकार एक जरूरत एक जो छोटी सी इनिंग। इस बार बढ़िया संपर्क, लेकिन प्रोटेक्शन मौजूद, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी वहां पर मौजूद।
ओ इस बार पड़कर थोड़ी सी उछली और बढ़िया ये गेंद तन्वेश गावड़े की ये बहुत ही बढ़िया ओवर। अब तक 2 ही रन इस ओवर में आए और 17वें ओवर प्रगति पर, उसके बाद 3 ओवर आने बाकी। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, देखते हैं वन बाउंस एंड बाउंड्री के पार। यहाँ पर वेलकम बाउंड्री दरकार थी। थोड़ी सी इस ओवर में यहाँ पर डॉट गेंदे आ रही थी, थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन ये चौका जो है इसकी भरपाई यहाँ पर करता हुआ। अब तक तन्वेश कावड़े की ये बढ़िया कमाल की गेंदें रही थी, लेकिन इस बार हाथ खोलने का मौका मिला ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, और इस गेंद पर चौका अर्जित करके स्कोर को बढ़ा दिया है 124। तो अभी भी इसके बाद 3 ओवर आने बाकी और 124 लग चुका है बोर्ड पर। इस बार बढ़िया ये यहाँ पर पॉइंट का खिलाड़ी पे मौजूद, एक ही रन मिलेगा। सूझबूझ भरी क्रिकेट, पिछले गेंद पर चौका लगा, ये बढ़िया गेंद, उसको सम्मान दिया और सिंगल लेकर इस ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 125 लग चुका है बोर्ड पर 5 विकेटों के बाद। इसके बाद 18 लीगल डिलीवरी से आने बाकी और सागर गुस्सा भी अपना बेल्ला यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, इशारा किया है ड्रेसिंग रूम के और ये पार्टनरशिप यहाँ पर जरूरत 18 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रन बटोरने होंगे। अगर इन 3 ओवरों में 30-35 रन भी आते हैं तो एक बढ़िया टोटल यहाँ पर कही जाएगी, क्योंकि दूसरे सेशन में यहाँ पर बैटिंग करना उतना आसान नहीं होता। और हालांकि ये इनिंग वहां पर विकास देसाई 33 रन, उसके बाद सोमेश प्रभु देसाई की अब तक बढ़िया ये यहाँ पर रही है बैटिंग। संजय नाइक जरूर वहां पर स्टंप आउट हो गए, लेकिन अच्छा हाथ 19 रन की ये उसकी पारी एक महत्वपूर्ण योगदान इस टोटल तक पहुंचने के लिए है। और इसके बाद 3 ओवरों का खेल यहाँ पर बाकी। सैयद बद्दी की आखिरी ओवर और सोमेश होंगे स्ट्राइक पर। पहली गेंद यहाँ पर प्रहार करने की कोशिश, घुटने टिके थे लेकिन संपर्क हुआ नहीं और डॉट के साथ इस ओवर की शुरुआत सैयद बद्दी कमाल की गेंदबाजी अब तक की है। इस बार संपर्क अच्छा, और ये यहाँ पर सिर्फ गेंद को उठाकर वापस लाना पड़ेगा। तो बढ़िया संपर्क, पिछली गेंद पर प्रयास कर रहे थे, कनेक्शन हुआ नहीं, लेकिन इस बार परखा जांचा और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो ये बॉल इतनी दूर गई है कि दूसरी बॉल जरूर यहाँ पर इशारा मंगवाने का अंपायर का। इसी तरह से यहाँ पर चौके की जरूरत, जो बचे हुए ओवर्स है उनमें ज्यादा से ज्यादा रन बटोर कर एक बड़ा टोटल यहाँ पर देना चाहेंगे जरूर कुरचोरेम वॉरियर्स, क्योंकि वेलिंग क्रिकेटर्स एक तगड़ी टीम, बढ़िया बैटिंग लाइनअप उनके पास भी मौजूद। फिर एक बार, इस बार दिशा से बढ़ के वाइड का इशारा होता हुआ, तो प्रेशर थोड़ा सा झलकता हुआ, पिछली गेंद पर छक्का लगा, इस बार ऑफ स्टंप से दूर रखने की कोशिश। और सोमेश का ये अब तक बढ़िया प्रदर्शन, 40 पर खेल रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्कोर पर। फिर एक बार बैकफुट जाकर पहुंच गया, वहां फील्डर मौजूद, लेकिन इतना समय था कि बल्लेबाजों को एक रन यहां पर कर दिया दौड़कर कंप्लीट। 41 व्यक्तिगत स्कोर हो चुका है सोमेश का, मात्र 9 रन दूर अपने अर्धशतक से। सागर गोसावी होंगे इस बार स्ट्राइक पर। इस बार संपर्क हालांकि उतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी एक रन यहां पर छिपात है कि सोमेश फिर एक बार होंगे स्ट्राइक पर, जिन्होंने एक छक्का अब तक लगा चुके हैं इस ओवर में। इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद, लेकिन थोड़ी सी पड़कर नीचे रही, शॉट हालांकि अच्छा, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन मौजूद और एक रन यहां पर जुड़ता हुआ।
तो ये अच्छा ओवर अब तक घटता हुआ, लेकिन फिर भी अगर एक चौका या छक्का इस गेंद पर लगता है तो एक बड़ी ओवर यहाँ पर जरूर होगी। इस बार कनेक्शन देखिए कहां तक जाती है, फील्डर वहां पर मौजूद अमे, और बाउंड्री लाइन पर यहाँ पर कैच। बहुत ही बढ़िया जजमेंट, अगर थोड़े से पीछे आते तो एक छक्के के लिए जाती, लेकिन बढ़िया ये विकेट, बढ़िया जजिंग कैच, और सागर गोसावी आउट होकर वापस। वन 135 हो चुका है स्कोर, और यहाँ पर रन गति को बढ़ाने की कोशिश में सागर गोसावी अपना विकेट वहां पर गवा बैठे, और अमित धामसेकर वहां पर थे फील्ड मिड विकेट क्षेत्र में, और बहुत ही बढ़िया जजिंग कैच। उसी के साथ छठा झटका लगा सागर गोसावी के रूप में। और सैयद बद्दी जो पिछला विकेट सागर गोसावी का तीसरा विकेट, बहुत ही बढ़िया अनुशासन के साथ गेंदबाजी, सही लाइन सही लेंथ के साथ 3 विकेट अपने नाम के सैयद बद्दी ने। और इसके साथ 18 ओवर का खेल समाप्त, 35 लग चुके बोर्ड पर। 19वीं ओवर की यहाँ पर शुरुआत तन्वेश गावड़े बहुत ही बढ़िया गति के साथ लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पर करते हैं गेंदबाजी। और पहली गेंद सटीक निशाने पर ऑफ स्टंप से बाहर रखी थी, सीधी जाती हुई कीपर के पास, और 19वीं ओवर की शुरुआत डॉट के साथ यहाँ पर करते हुए तन्वेश गावड़े, एक बहुत ही बढ़िया उभरता हुआ खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ बहुत ही बढ़िया गति के साथ करते हैं गेंदे। इस बार संपर्क वहां पर अच्छा, लेकिन उतनी अच्छी कैच वहां पर तीर की तरह जा रही थी गेंद, आसान नहीं होता ऐसे कैचेस पकड़ना, लेकिन बढ़िया ही एफर्ट, बढ़िया ही फील्डिंग, और इसी के साथ और एक झटका यहाँ पर लगता हुआ सोमेश प्रभु देसाई, हालांकि बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, बढ़िया टच में आज दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस अंतिम ओवरों में यहाँ पर अपना विकेट खोते हुए, और शॉट हालांकि बढ़िया थी, लेकिन फील्डर की भी तारीफ कर रही बनेगी, बहुत ही गति के साथ ये गेंद आई थी फील्ड्स की तरफ, और 7वां झटका लगता हुआ इस विकेट के साथ। और सोमेश की बढ़िया इनिंग, 42 रन बनाए, एक बढ़िया आक्रामक पारी रही थी, लेकिन फिनिश नहीं कर सके। उसी के साथ और यहां पर दूसरी सफलता मिलती हुई इस ओवर की, बैक टू बैक विकेट्स। संदीप अभी अभी उतरे थे, पहली गेंद फेस कर रहे थे, लेकिन पहली गेंद पर वापस भेजा। तो इन अंतिम ओवरों में दर्शक चाहते थे कि चौके छक्के, लेकिन यहाँ पर विकेट्स लगातार अंतराल के बाद हैट्रिक यहाँ पर एक मौका, क्या तीसरा विकेट अपने नाम तन्वेश कर पाएंगे? 2 विकेट 2 गेंदों में अपने नाम कर चुके हैं।
विक्की नाइक नए बल्लेबाज उतरे हैं और हैट्रिक का मौका यहाँ पर तन्वेश गवड़े के लिए 2 गेंदों में लगातार 2 विकेट। और क्या ये तीसरा विकेट यहाँ पर मिल पाएगा? क्या विक्की इस गेंद को डिफेंड कर पाएंगे? पता चलेगा इस गेंद पर। ओहो, ये इस बार अच्छा, ये यहाँ पर रन आउट होने की संभावना। अगर फील्डिंग अच्छी होती तो जरूर यहाँ पर एक मौका बन सकता था, लेकिन हैट्रिक का मौका यहाँ पर हैट्रिक नहीं हो सके। रन यहाँ पर विकी ने दौड़ कर किया कंप्लीट। 136 इस एक रन को जोड़कर हुआ है कुल स्कोर। सुनील सावंत पॉइंट का खिलाड़ी वहां पर तैनात, लेकिन समय था दोनों के पास कि एक रन करते दौड़कर कंप्लीट। 8 विकेट अब तक खो चुके हैं कुरचोरेम वॉरियर्स। बल्लेबाज सिर्फ 2 बल्लेबाज यहाँ पर कुछ ये बढ़िया कमाल की गेंद सीधी जाती हुई कीपर के पास। अभी अभी उतरे हैं मैदान पर, आसान नहीं होता ऐसे शॉट्स खेलने। और इसी के साथ 19वीं ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 137 लग चुके बोर्ड पर 8 विकेटों के नुकसान के बाद। तब तक का लेखा जोखा विकास देसाई 33 रन, एक बहुत ही बढ़िया नॉक। उसके बाद सोमेश प्रभु देसाई 42। तो बाकी के जो बल्लेबाज है वो ज्यादा कुछ कर नहीं सके, उसी की बदौलत यहाँ पर थोड़ी सी बैकफुट पर कुरचोरेम वॉरियर्स। और एक शॉट हालांकि अच्छा, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन मौजूद। फाइनली का खिलाड़ी, सॉरी मिड ऑफ का खिलाड़ी वहां पर मौजूद। एक ही रन यहां पर मिलेगा, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और आखिरी ओवर, आखिरी 5 गेंदे 138 लग चुके हैं बोर्ड पर। विक्की नाइक इस बार होंगे स्ट्राइक पर। ओ एज लगती है और यहां पर रन जिस रूप में भी आई है, वेलकम रन आते हुए। हालांकि ये कन्विंसिंग शॉट नहीं थी, लीडिंग एज लेती हुई गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई और ये चौका यहां पर वेलकम बाउंड्री विक्की नाइक के बल्ले से आता हुआ पहला चौका। एक 142 इस चौके को जोड़कर हुआ है टूल स्कोर। इस बार थोड़ी सी नीचे रही और डायरेक्ट हिट और वापस चलना पड़ेगा सुनील को। जरूरत नहीं थी यहां पर। आखिरी जोड़ी मैदान पर, अभी भी 3 गेंदे इस आखिरी ओवर के आने बाकी और 142 लग चुके हैं बोर्ड पर 10 विकेट, सॉरी 9 विकेट के नुकसान पर। चंद्रेश देसाई उतरे हैं मैदान पर और एक रन, ये रन यहाँ पर महत्वपूर्ण रन है। जितने भी रन आएंगे, एक चौका या छक्का अगर यहाँ पर आता है तो लगभग 150 के करीब यहाँ पर स्कोर पहुंच सकता है। 143 लग चुके हैं बोर्ड पर इस एक रन के साथ।
ओ यहाँ पर शॉट तो हालांकि बहुत ही बढ़िया अमित धामसेकर वहां पर मौजूद और आसान सा कैच, उसी के साथ इस इनिंग की यहाँ पर समाप्ति होती हुई 143 लगाए उस अपने इनिंग में कुरचरेम वॉरियर्स और 144 यहाँ पर रन बनाने होंगे वेलिंग क्रिकेटर्स को।
Oh, and he's cleaned up first ball. What a start. Deepraj Gavkar it is. The flying Gavkar playing for Curchorem Warriors and a super strike. Wicket of the very first ball. Curchorem Warriors on the high, on a roll. So Urvesh out just like Tushar Sawant. The golden duck for both the openers. So you can say a very good start, and on top of that, whenever you get a wicket of the first ball, the team is always on a high, on a roll. That's the greatest start that you can get. And here it is Amit Amshekar, and Amit Amshekar immediately taking the free hit. Well, you can see certainly more noise on the ground when Amit Amshekar will be on strike. Because all these players know him very well. He's day in, day out with the same persons, and he's playing against them in the semi-finals. So a little more comments from behind the wickets, a little more noisy. Some sledging, they will definitely be there. Here comes Deepraj. Oh, what a strike! This is Amit Amshekar for you. Although it was a free hit, but this man is in super form. He is not worried about the pace, the big name that is there in front. He has got the talent. I just love that shot. Just loved it. The game is on. Fire with fire. Very nicely played. Very nicely played. Well, I really feel that the way he has batted in that previous game in the quarterfinals, he was so sensible, so smart. He had not gifted his wicket. He was out because he has edged it, that inside edge going and chopping onto the wickets. The bails were removed. But many a times in his earlier career, earlier matches, he used to gift away his wicket. Free hit has been taken here by Felix Dice as well. Right at the start, 2 free hits in the first over itself. Maybe the batsman feels that I am up against a very good bowler, very good all-rounder, so let me get my free hands. Let me open the shackles. As once again played down the ground. This is a full-length ball. Yorker length delivery here tried by the bowler. No room whatsoever, just a single. So we saw a wicket of the first ball. We saw a 6. We saw a single, a Yorker length delivery. Good start. Oh, that's a cracker. Oh, beautiful delivery. Just a ball in the good length area, and the ball went away sharply.
Now this is unplayable. Nothing wrong that he has done over here. There's a cracking delivery. The last ball of the first over. 8 for 1 in 1. Well, this is a talent. This is some talent, you can say. The first ball that he got rid of the wicket, Urvesh, was the ball that came back in towards the right-hander and between the gates of the bat and the pad. And this one, the last ball for Amit Damshekar, the ball pitched and moved away slightly. Lucky there, Amit Damshekar. He played it well in the end. Whenever you don't nick the ball, you should always say you played it well. So in comes Chandresh Desai, the man who swings the ball back in. 2 wickets taken by Chandresh Desai in the first match, where one stunner was taken by Sanjay Naik. This time a wide way to outside off, very nicely left here by Felix Tyres. So they need good innings here from both these men. They need a partnership. You feel that this score is not much, but this is leather ball cricket. The wickets keep falling. This is a lovely shot. Very nicely fielded. Chance of a run out. Direct hit was required, and the man in the deep had to take the action immediately. And wicket is coming all the way from the mid-wicket region towards the square leg region. So a single taken, but a very well-timed shot here. Well, I've seen this man who just now fielded a ball single-handedly in his bowling, batting and fielding department. Got the championship in the Sanguem Cricketers Tournament for Agonda Warriors. That was played in Sanguem, GCA ground. Single-handedly. One-man show. Deepraj was it that time. Scored a century, taken wickets, taken some stunning catches. The best fielder that you can get in your side. Arguably the best fielder of this tournament. So taking him on is not going to be easy for these batters. Oh, very nicely bowled. Very nicely bowled. There will be talk about this ball later on at Foxstone ground. Maybe tomorrow. He's always happy, Chandresh Desai, whenever he bowls a dot ball, whenever he takes a wicket. And he always discusses there. Amit Damshekar. Oh, once again, this time, Chandresh Desai gets rid of Amit Damshekar. Well, he's very happy. He is very happy, not because he has taken a wicket off any other batsman, but finally he will discuss it later on with Amit Damshekar itself on the WhatsApp chat. So now he just have to go back into the dressing room and think how badly he has played that shot, trying to play down the third man region. When the ball was bouncing, he was better off playing a defensive shot over there. And a mistake by Amit Damshekar. He has to see this match from the dressing room now. Well, the big man talking about the big man, ex-Goa Ranji player Avadut Amonkar. Was watching him, he was watching the semi-finals, maybe got a call. I can definitely watch it live. Wonderful services Audi has given to Goa cricket and always here on the ground whenever some matches are there. But finally, for some important business calls, you got to attend it. But always you can watch it live on Goa Livecast. So third of the free hit has been taken here. So once again, Chandresh Desai picks up wicket. The ball came in much more than he anticipated. And 2 wickets taken in 2 overs.
both of the men, especially of Amit Damshekar. This was a crucial wicket, and in comes Darshan Misal. Now, oh, going for the big one, missed it. Trying to go for the big one. Chandresh Desai is on a roll here. He's bowling accurately, bowling persistently in that right channel. Although the right-hander has gone back and the left-hander has come on the strike, that has nothing to do with the line and length he's bowling. He's not earning a big today in the semi-finals. This time played nicely, watchfully. The most important wicket here in this match. The man on strike, the man on screen, Darshan Misal. But a good over nevertheless. Wicket taking over for Chandresh Desai comes to an end. At the end of 2, it's 10 for 2. This time nicely played away towards the point region. Deepraj once again starts from railway gate. This time played nicely. So they are doing it in singles at the moment. So once you are losing 2 wickets, the batsman very well knows, and Darshan Misal, Felix Dias, both are capable enough batsmen. It's time to resurrect the innings. Deepraj Gaonkar, if they lose a wicket at this moment, Veling cricketers, it's not going to be easy to come back from this point of time. So the innings of Darshan Misal, the captain of Goa Ranji team, becomes even more required. Oh, that's a cracker. That's a cracker. What a delivery. That's an absolute scorcher. If you need to get rid of Dash Darshan Misal, it has to be this delivery. That's an extra effort given here by none other than Deepraj Gaonkar, the flying Gaonkar. And look at the way he has flied after the catch has been taken here by the keeper. He knew the moment that it was struck on the gloves of the batsman. Dash goes back in the pavilion, and the jubilation in the camp of Curchorem Warriors. They are striking it almost every over. 3 wickets so far in 3 overs. 11 for the loss of 3 in the 3rd over. So reeling way far in this match. Curchorem Warriors through Deepraj Gaonkar are on a roll, on a spring. "11 for 3. You can see a lull there in the camp of Veling cricketers at the moment. Very calm. They know that Curchorem Warriors, with the starter that has been given by both the bowlers, are so far looking firm favourites. In comes Pritesh Naik, and the right man to be sent at this point of time. A cool and calm, composed character. Captain of the side. And if at all they need Pritesh Naik to play captain's knock, it is here in the semi-finals.
Oh, that was also an inside edge. Lucky boundary here. Absolutely lucky. Nothing bad that he has done. Perfectly bowled. Just that the bat came on time. Yeah, nicely bowled. So boundary. Not convincing one though. (15 for the loss of 3 and 2.3. 129 runs required in 105 balls. So that asking run rate is not much with a golden over batting. Power play overs are still left. It's just a wickets column. So very nicely bowled. A man to have. He has done a mistake in the batting. His time when he was batting, played a wrong shot, rash shot, which is uncalled for with the experience that he has, Deepraj Gavkar. And now he knows I have to give little extra, and that little extra got him the big fish. Nicely played, watchfully played here by Pritesh. He knows now there is no point in playing these natural shots. It's time to bend your head down in respect of the bowlers, how the bowling is going on. At the end of 3 is 16 for 3. In fact, 15 for 3. So Chandresh Desai rightly continues with his good bowling from the far end. So the field restrictions have eased off now. The 3 overs of mandatory power play. Deep point. Deep square. And outside edge. Lovely fielding here. Good, fast, quick fielding from the Kakoda Express. And you require express fielding in at the third man region and final leg region. The ball flies in over that. And you have to make it quick. Surprised to see Balkrishna Hodarkar not playing. They might require a spinner. Yes, Tushar Sawant is there. Definitely, but one more off spinner could have definitely been an added advantage. Maybe some sort of calculations how to go about this match. Chandresh Desai. Nicely bowled. Been bowling so far very well. Not even a single loose ball. And maybe that batsman is trying to play outside the batting crease, the popping crease. So once again a slight field change. Free hit has been taken because of the field changes because of the free hit at the moment. So the deeper fine has been brought inside Sagar Gosavi towards the short fine leg region. There was a gully which has been taken towards the short mid wicket. They are trying to use all the free hits and trying to slash it without any returns. So the free hits, only one free hit was counted for 6 runs. That was a good shot from Amit Amshekar. But apart from that, so far,
It is both the bowlers ruling at the moment. This is appeal here. Appeal, big appeal here from a wicketkeeper and also the bowler. There was maybe a deflection, but definitely umpire thinking is definitely not of the close. Maybe clipping somewhere, so he's unsure. We don't have the still now the sneakometer technology. It will definitely come maybe maybe in the next edition from Sanguem cricketers. They are the pioneers of the use of technology in leather ball cricket, and off they go for the second run. This is good running with the wicket. Scamper through for second. So as far as technology is concerned, there was an appeal from Chandresh Desai behind the wicket, which was put down by the umpire. And 2 runs taken of the last ball after completion of 4 is 18 for 3. So the ball keeping low here. In comes Kakuda Express. And with the height that he has got, the ball should have bounced more. Maybe a little low. The starts of the 5th over, a change of bowling from this end. Really big at hand. So very nicely bowled here. The problem here is once you have lost wicket, sometimes even the bad balls, the intention you on your mind, I cannot take a risk at this stage. I have to go through with those singles. Sometimes, yes, the odd boundaries will keep on coming, but the natural instinct, the natural play that you have has to be cupped down. So field change prompted here. Deepraj interrupted to the bowler and the captain, saying that no point in keeping the long on with the pace that he's bowling. Beaten him, all ends up. Beaten, all ends up. The foot movement was absolutely not there. Not on the front foot, not on the back foot. But sometimes with the pace that a bowler has, you have to be clear in your mind. You have to be clear in your thoughts whether I'm going to go on the front foot or on the back. There cannot be half mind. This time down the leg side, missed here by the keeper. Vikas Desai doesn't do the job usually. Wide signal here. So they are short of a regular keeper, and these things are going to happen most of the times. Amit Amshekar plays regularly for this team, and he is the keeper, or either Bharat Arkas sometimes. This time nicely flicked away on the leg side.
fielded in the deep. So small glitches in the field, especially by the keeper, are accepted. We have seen many a times when some makeshift keepers have done a job for India, Rahul Dravid or KL Rahul or players like that. They have done some fumbles, some mistakes as well, not like the regular keepers. That's the reason why in test matches we always have the regular keeper. It's a tough job. It's a very tough job in the game of cricket. Whether it's a T20, T10 or any format may it be, especially in leather ball. It's altogether a different game. And the wicket keeper's job is at the topmost point, the toughest. Once again, down the leg side. Definitely a single off leg by looks to be. We have to wait for umpire signal. Yes, it is from Ajit Shirodkar. So a decent over to start off from Sunil Sawant, the Kakoda Express. And at the end of 23 for the loss of 3. Certainly, as far as 5 overs is concerned, with 3 wickets going down and 3 good players, top order batsmen, Ahmed Damshekar, the man in form, and especially the captain of Goa Ranji team, Darshan Misal. You can certainly say with authority, Curchorem Warriors are on the high at the moment. Still a long time to go, long path ahead for both the teams to enter into the finals. And Gino Dragons also will be looking who is going to face them. So Chandra Desai is definitely going to continue his bowling. But definitely a change in the commentary box with Hindi voice is over to Sanket Gaonkar. तो छठा ओवर है प्रगति पर और हालांकि स्कोर यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश में अब तक का जो गेंदबाजी रही है बहुत ही बढ़िया रही है और छठा ओवर प्रगति पर 23 रन। इस बार यहाँ पर बैकफुट जाकर गेंद को ढकेला वहां पर मौजूद सागर गोसावी, 1 रन यहाँ पर मिलेगा। तो 3 विकेट जिस तरह से यहाँ पर शुरुआत हुई थी कुरचरेम वॉरियर्स उसी तरह की यहाँ पर शुरुआत, हालांकि शुरुआती विकेट यहाँ पर जरूर गिरे हैं और संभालने की कोशिश, यहाँ पर पार्टनरशिप बनाने की कोशिश। इस बार वहां पर बढ़िया गेंद और अपने फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग। फेलिक्स डायस, प्रीतेश नाइक दोनों की यहाँ पर जोड़ी और तीसरा विकेट, 3 विकेट जो यहाँ पर गिरे उसके बाद पारी को यहाँ पर संभाला है अब तक का। दोनों में अच्छा तालमेल, अच्छे यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इस बार बॉल पड़कर थोड़ी सी नीची रही, तो अनइवन बाउंस यहाँ पर देखने को मिला है। कुछ गेंदें पड़कर नीची रह रही है, कुछ ऊपर उठ रही है और जिस तरह से कहा था कि दूसरी इनिंग में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है यहाँ पर बल्लेबाजी। कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी दीपराज, उसके बाद चंद्रेश और सनील, 3 बॉलर का इस्तेमाल अब तक किया है कप्तान ने। और इस बार वहां पर पीछे फील्डर मौजूद संजू, 1 ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। और बढ़िया हुई ओवर, 5-6 ओवरों का खेल इसी के साथ यहाँ पर होता हुआ समाप्त। 25 रन लग चुके बोर्ड पर 3 विकेटों के नुकसान के बाद। चंद्रेश
जैसा कि ये तीसरी ओवर थी और इस ओवर में केवल 2 ही रन अब तक दिए हैं और एक विकेट अपने नाम अब तक करने में कामयाबी मिली है चंद्रेश देसाई को और दीपराज गांवकर जिन्होंने 2 विकेट अपने नाम अब तक किए हैं। इस तरह से कुल 3 बल्लेबाज जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज वापस भेजने में कामयाबी मिली हुई अब तक कुरचरेम वॉरियर्स को और एक विकेट की यहाँ पर तलाश सनील सावंत दूसरी ओवर यहाँ पर। पहली गेंद पड़कर थोड़ी सी नीची रही और बहुत ही बढ़िया गति के साथ कीपर विकास देसाई वहां पर मौजूद 33 रनों की पारी खेली थी और उसी की बदौलत ये रन एक बढ़िया टोटल हालांकि 144 यहाँ पर बनाने हैं लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर धीमी शुरुआत। फिर एक बार बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की गेंद और एक डॉट गेंद। तो डॉट गेंद यहाँ पर प्रेशर जरूर बढ़ाएगा। यहाँ पर जो बल्लेबाजी है बल्लेबाज है जो पार्टनरशिप यहाँ पर जो पनप रही है सिंगल डबल करके यहाँ पर रन बोर्ड को चलाते रहना है। अगर इसी तरह से डॉट गेंदें आती रही तो मुश्किल यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती जाएगी वेलिंग क्रिकेटर्स के लिए। फिर एक बार पटकी हुई गेंद बैट फुट पर जाकर वहां पर सागर गोसावी एक रन और समय था दोनों के पास की दौड़कर यहां पर रन कंप्लीट कर दे। जो महत्वपूर्ण विकेट उवेश रेडकर पहली गेंद पर वापस भेजा दीपराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। उसके बाद अमित हमसिकर का विकेट चंद्रेश ईसाई के नाम रहा और दर्शन मिसाल जो बड़ा नाम बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण कड़ी उसे भी वापस भेजा दीपराज गांवकर ने। बढ़िया गेंद लगभग यॉर्कर गेंद और उतनी ही बढ़िया तरीके से वहां पर खेला संजय फील्डर वहां पर मौजूद और एक रन यहां पर जुड़ता हुआ। तो विकेट की तलाश यहां पर होगी कप्तान को जरूर और सनील सावंत पहला ओवर 4 रन दिए थे। इस ओवर में भी अब तक केवल 2 ही रन बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ बढ़िया इकोनॉमी के साथ यहां पर कर रहे गेंदे। इस बार आ गया एक आदमी का इस्तेमाल वहां पर बढ़िया कीपिंग अपील जरूर हुई है। उत्साह ज्यादा इस अपील में लेकिन अंपायर ने यहां पर नकारा और उसी के साथ और एक डॉट डिलीवरी यहां पर आती हुई। जो विकेट्स गिरे थे 3 विकेट्स गिरे थे उसके बाद यहां पर जो बॉलरों का कॉन्फिडेंस वो बढ़ता हुआ और एक बार कॉन्फिडेंस जब किसी भी बॉलर में आ जाता है तो वो लय जब प्राप्त करता है तो बढ़िया गेंदे वो डिलीवर करता है और वही करते हुए सनील सावंत बढ़िया ये गेंद इतनी ही अच्छी तरीके से यहाँ पर रक्षात्मक तरीके से खेली और इसी के साथ 7 ओवरों का खेल होता हुआ यहाँ पर समाप्त 27 रन लग चुके बोर्ड पर 3 विकेटों के नुकसान के बाद। तो अब तक का लिखा चुका 7 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। वेलिंग क्रिकेटर्स थोड़े से बैकफुट पर क्योंकि जो उनके 3 अहम बल्लेबाज थे उन तीनों को वापस यहाँ पर भेजा उर्वेश रेडकर उसके बाद अमित हमशिकर और दर्शन मिसाल तीनों ही बल्लेबाज यहाँ पर ज्यादा कुछ खास नहीं कर सके। उर्वेश पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड किया था दीपराज गांवकर ने। उसके बाद एक विकेट वहां पर अमित आमसेकर की विकेट रही चंद्रेश देसाई के नाम और उसके बाद दीपराज गांवकर ने दर्शन मिसाल जो अहम कड़ी थे उसे भी यहाँ पर बॉलिंग में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया लेकिन बैटिंग में यहाँ पर
तो 7 ओवर हो चुके हैं और 8वीं ओवर यहाँ पर सोमेश प्रभुदेसाई एक बढ़िया नॉक 42 रन बल्ले के साथ यहाँ पर बनाए थे। अब कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पर कुछ विकेट्स अपने नाम करे और एक विकेट का पतन यहाँ पर जरूर बैकफुट पर लाएंगे वेलिंग क्रिकेटर्स को। 3 विकेट हालांकि ले चुके हैं और चौथी विकेट की यहाँ पर तलाश। सोमेश एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर यहाँ पर सटीक लाइन विकेटों पर गेंदें रखते हैं और मौका नहीं देते हैं बल्लेबाजों का हाथ खोलने का। पहली गेंद और यहां पर अपील जरूर हुई है, लेकिन लगता है कि ये गेंद पहली गेंद जिस तरह से मैंने कहा था कि सटीक का गेंदे लाइन और लाइन जो पकड़ते हैं तो मौका नहीं रहता है बल्लेबाजों के लिए बड़ा हिट खेलना। पहली गेंद सटीक निशाने पर। फिर एक बार यहां पर अच्छी गेंद, 2 डॉट की डिलीवरी बैक टू बैक। तो जो यहाँ पर जिस तरह की शुरुआत बॉलिंग की दीपराज में की थी, तो शुरुआत के ओवर जब अच्छे रहते हैं, शुरुआती विकेट जब गिरते हैं तो आने वाले गेंदबाजों के लिए यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि जो ऊपरी क्रम या जो आक्रामक बल्लेबाज वो वापस जा चुके हैं। अब यहाँ पर और एक विकेट नहीं चाहेंगे वेलिंग क्रिकेटर्स। तीसरी गेंद वहां पर और ये थोड़ी सी मिस फील्ड और सागर गोसावी यहाँ पर अंत में जरूर वहां पर बढ़िया बैकअप। और यहाँ पर 1 रन और दौड़कर कंप्लीट किया, तो मिस फील्ड वहां पर थोड़ी सी सागर गोसावी द्वारा, लेकिन बढ़िया बैकअप वहां पर। इस बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश, प्रहार करने की कोशिश, क्योंकि जानते हैं कि ये ओवर अब तक बढ़िया रही है। डॉट गेंदे बहुत थे, इस बहुत सारी गेंदे डॉट, एक ही रन केवल अब तक इस ओवर में आ चुका है। फिर एक बार थर्ड मैन की दिशा में गाइड करने की कोशिश, लेकिन बढ़िया ही लाइन, बढ़िया ही लेंथ। फिर एक बार गेंद जाती हुई कीपर के दस्तानों में। इस बार बढ़िया शॉट, वहां पर फील्डर तैनात, मिडियन का खिलाड़ी जब तक कि फील्ड करता। 1 रन यहां पर दौड़ करके यह कंप्लीट। 2 रन आए इस ओवर में से और उसी के साथ 8 ओवर का खेल हुआ है यहां पर समाप्त। 29 लग चुके बोर्ड पर 3 विकेटों के नुकसान के बाद। तो और एक ऑलराउंडर कुर्चोरेम वॉरियर्स का संजय नाइक का यहाँ पर बॉलिंग पे बुलाया गया है। और जब तक ये जो कमाल की गेंदबाजी, एक अनुशासित गेंदबाजी जब तक रही है कुर्चोरेम वॉरियर्स की, हालांकि स्कोर 143 ही बनाए थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफेंड करते हुए, और जो बॉलर अब तक इस्तेमाल किया है, 5 बॉलर का इस्तेमाल किया है और 5 बॉलर ने बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी की है। 3 विकेट वापस भेजे और 9वीं ओवर यहाँ पर आती हुई संजय नाइक।
और पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, वहां पर पीछे प्रोटेक्शन मौजूद, दीपराज गांवकर एक रन और जुड़ता हो टोटल में। तो पहला गेंद यहाँ पर पहली गेंद पर एक रन संजय नाइक जो कि एक होनहार टैलेंटेड ऑलराउंडर कुर्चोरेम की तरफ से। फिर एक बार यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ये गेंद पड़कर उछली। यहाँ पर बल्लेबाज जो है यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी गेंद यहाँ पर उछलेगी, लेकिन डॉट गेंदे और डॉट गेंदे यहाँ पर जरूर प्रेशर यहाँ पर बढ़ेगी, रन रेट आस्किंग रन रेट जरूर यहाँ पर बढ़ता जाएगा। ओ यहाँ पर ये बड़े बढ़िया प्रहार, वहां पर फील्डर जरूर मौजूद और ये यहाँ पर कैच, चौथा झटका लगता हुआ संजय नाइक को यहाँ पर बुलाया गया बॉलिंग के लिए कप्तान ने, और कप्तान के इस भरोसे पर खड़े उतरते हुए चौथा झटका देते हुए, और वेलिंग क्रिकेटर जो दबाव में थी यहाँ पर विकेट्स गिरने की वजह से और प्रभाव बढ़ता हुआ और प्रेशर बढ़ता हुआ, और उसके साथ तो 30 के स्कोर पर लगा है ये चौथा झटका। अश्विन वहां पर तैनात थे और बहुत देर खामोश था बल्ला। प्रीतेश नाइक जानते थे कि एक यहां पर बड़ी इनिंग खेलनी है, वहां पर डटकर खेलना है, लेकिन इस बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके। बाउंड्री हासिल करने की कोशिश में यहां पर गवा बैठे अपना विकेट, और संजय नाइक को मिलता हुआ पहला विकेट। हालांकि बहुत ही बढ़िया यहां पर एक पारी खेली थी, 19 रन की पारी खेली थी संजय नाइक का, यहाँ पर कमाल करते हुए बॉलिंग में। नए बल्लेबाज संकल्प प्रभु उतरे हैं सुपर सब, और संजय को यहां पर मिली है पहली सफलता। और ये एज जरूर लगा था, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात सागर गोसावी के पास जाती हुई गेंद, पहली गेंद पर सिंगल अर्जित किया और अपना खाता खोला। यहां पर 31 इस रन के साथ हुआ है कुल स्कोर। संकल्प प्रभु लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उतरे थे मैदान पर। ओ यहां पर लीडिंग एज, और एक यहां पर झटका लगता हुआ फेलिक्स डायस जब तक यहां पर डटे हुए थे, एक छोर संभाल के रखा था, लेकिन इस बार शिकार बरे संजू के। तो संजू यहां पर डबल धमाका, दूसरा विकेट आता हुआ इस ओवर में। तो पीछे से पांचवा झटका इसी के साथ यहां पर लगता हुआ। यहां पर कप्तान ने बुलाया था संजय नाइक को बॉलिंग के लिए, और ये यहां पर जो निर्णय कप्तान का सही साबित होता हुआ, पहले प्रीतेश नाइक को वापस भेजा, उसके बाद ये बड़ा विकेट संकल्प अभी अभी उतरे हैं नॉन स्ट्राइकिंग लाइन पर है, और जो बल्लेबाज फिलिक्स डायस जिन्होंने ओपन किया था अब तक एक छोर संभाले रखा था, उस बल्लेबाज को यहां पर वापस भेजने में कामयाब है। अब नए बल्लेबाज सैयद बद्दी जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है, और आज यहां पर जिम्मेदारी है, यहां पर जरूरत है एक बड़ी इनिंग खेले।
पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और रक्षात्मक तरीके से खेला, एक रन यहाँ पर पहले ही गेंद पर अपना खाता खोलते हुए सैयद बद्दी, उसी के साथ सफल ओवर, ये 2 विकेट इस ओवर में अपने नाम कर बैठे किया है संजय नाइक। और सफल ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 9 ओवरों का खेल यहाँ पर होता हुआ समाप्त, 32 लग चुके बोर्ड पर 5 विकेटों के नुकसान के बाद। तो इस मैच का लेखा जोखा 9 ओवरों का खेल यहाँ पर हुआ है समाप्त, 32 लग चुके बोर्ड पर, लेकिन जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज 5 बल्लेबाज कोई भी वहां पर टिक नहीं सका और पांचों बल्लेबाजों को वापस भेजा सैयद बद्दी और संकल्प प्रभु की जोड़ी यहाँ पर हुई है मैदान पर। सोमेश प्रभुदेसाई दूसरी ओवर यहां पर, पहली गेंद पर बैकफुट पर जाकर हल्का सा पंच स्वेल की दिशा में गेंद गई, वहां पर फील्डर संदीप मौजूद, 1 रन। और पिछली ओवर बहुत ही बढ़िया रही थी सोमेश की, केवल 2 रन दिए थे और डॉट गेंदे जब जब आती है तो प्रेशर यहाँ पर बढ़ता है और वही करने की कोशिश, रूम नहीं देते हैं, मौका नहीं देते हाथ खोलने का। तो ये एक बल्लेबाज यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, कुछ एक ऐसी पारी यहाँ पर खेलनी होगी उससे कि ये मैच यहाँ पर बने, लेकिन अभी फिलहाल बैकफुट पर वेलिंग क्रिकेटर्स। बढ़िया गेंद, सटीक लाइन और लेंथ, पिछली ओवर जिस तरह की लाइन और लेंथ वहां पर जिस लाइन के साथ शुरुआत की थी वही यहां पर बरकरार रखते हुए 2 ही रन दिए थे पहली ओवर में और दूसरी ओवर में भी बढ़िया ये शुरुआत। यहां पर गाइड करना चाहते थे, थोड़ी सी यहां पर मिसफील्ड की पतवार, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते और एक विकेट, यानी यहां पर और मुश्किलें बढ़ जाएगी वेलिंग क्रिकेटर्स के लिए। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पुल किया, वहां पर फील्डर तैनात, मिड विकेट क्षेत्र में 1 ही रन यहां पर मिलेगा। तो 1-1 रन यहां पर ज्यादा कुछ परेशानी यहां पर नहीं होंगे उस 1 रन से कुरचरम वॉरियर्स के लिए, और एक विकेट की तलाश यहां पर जरूर होंगे और सोमेश पूरी यहां पर कोशिश करते हुए। इस बार यहां पर और ये अतिरिक्त रन में इजाफा होता हुआ बाउंड्री लाइन की तरफ रुख करती हुई, बहुत देर बाद ये बाउंड्री यहां पर आई है और वाइड का इशारा, 5 रन अतिरिक्त रन जोड़ते हुए टोटल में। तो अब तक किस तरह की लाइन और लेंथ पकड़े थे, इस बार दिशा से बढ़ के लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा और कीपर द्वारा मिस, उसी की बदौलत 5 रन जुड़ती हो टोटल में। इस बार बैकफुट में जाकर हल्का सा पंच अपने फॉलो थ्रो में, यहां पर डायरेक्ट हिट की दरकार थी, अगर डायरेक्ट हिट होता जरूर बद्दी का वापस जाना पड़ता था, लेकिन अंत में ये रन कंप्लीट और बढ़िया बैकअप वहां पर। तो इसी के साथ 40 रन यहां पर बन चुके हैं, 5 विकेट वापस जा चुके हैं।
इस बार फिर एक बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद थर्ड मैन की दिशा में, वहां पर सागर गोसावी डाइविंग एफर्ट और एक रन यहां पर जरूर जुड़ेगा। उसी के साथ 10 ओवरों का खेल यहां पर हुआ है समाप्त। 41 लग चुके बोर्ड पर और इसके बाद 10 ओवर आने बाकी और 10 ओवरों में 103 रन यहां पर बनाने होंगे और आगे का हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी कमेंटेटर हमारे सीनियर हरीश काकोडकर होंगे कमेंट्री बॉक्स में। So now it's time for the golden over. At the run chase, the first half, 41 for 5, not a good scorecard at all. Just 1 6 and a 1 boundary throughout these 10 overs, and apart from that, there is nothing to show here in this scorecard. Ah, what a shot! Well, those who are sleeping, it must have woken them from the slumbers. Please get alive. This man, Sayyid Badi, is still there on the wicket. Till the time he is there, hopes will be there of Veling cricketers. This has gone, this has flied many meters back. And the organizer Sanguem cricketers are doing every possible effort to get the ball back. So once again that ball needs some searching. Bush Rangers from Sanguem has been especially been given the job to do the job in Curchorem. And they have the expertise as far as Sanguem is concerned. Biggest forest areas, they can go in any of the bushes and gets back the ball on time. This time nicely played here. So he's getting the timing back. Look at the way the ball is flying. So you can come to know the when you are batting, when you're timing the ball, where the ball is moving towards the fielders, the boundary riders, that he's feeling good. So far, not even a single dot ball has been played by Sayyid Badi. This over was very important, a golden over, and 6 runs have come from the first ball, then a single, 7 so far. Sankalp Prabhu, the left-hander. So simple job left to him is take the singles. The wickets column is what is hurting them. He was trying to flirt with that ball, and it's just that he was not successful in that flirting, as he did not kiss the bat. So some chatting going on here, and there was a little false start, a stoppage. In comes Dipraj once again. Once again, this time wide, not happy Dipraj, but umpire says definitely a wide. So 8 runs coming off this over so far. How can they get? How much? Maybe a 10, 12. And suddenly that 6 has woken the supporters of Veling cricketers. Are they going to fly across? Oh, the ball goes across away from Sagar Gosavi.
Well, that was a deviation there from some spot, and the deviation has certainly worked in favor of the batsman. Oh, this is going to be an expensive over here. 12 runs. This is a golden over multiplied by 2. So they were going at 4 runs per over in 10. And with these runs added, they will definitely go around 6 runs per over. Again, the runs and the run rate is going to be a little up here after the end of this over. Short ball nicely played. Oh, this was a single there. This was a single there. Syed Badi maybe didn't think about it. Maybe he's thinking that let's not take a risk here. Let's calm down. We have got the runs required. So last ball is yet to be bowled. Oh, nicely played. He finds the gap. The man had to do a lot of job and he misfields it. He misfields it. This over is the match turning point. Changing over. The complexion of the match has shifted immediately. A 6 from Syed Badi. Then 2 boundaries coming from the bat of the left-hander. And the score immediately moves on to 73. So we are almost coming at 5:45. A slightly slow over rate maintained here by this team. And the end of 11 overs. 32 runs have come. So 16 for the bowler and 16 plus for the team Veling cricketers. At the end of 11 overs, the score is 73. 73 for the loss of 5. Certainly, the run rate has increased. The run rate has got a big shift here. From down towards the upward movement. Well, they were going with small ripples in the first 10 years. This is a big spike. Big spike, big upward movement, sudden shift. So golden over has definitely gone totally in favor of the batting unit. And now this match is on. Badi wants to play his shot. Badi wants to play his game. 71 more runs required of 53 balls after that ball has been bowled as a dot ball from Somesh. Nicely bowled here. There are 3 men patrolling that region. Tushar Sawant, Sagar Gosavi. So right men have been kept behind the wickets. It's a crucial phase. Golden over was very important for this side. They have done a very good job. And now sudden requirement of taking a wicket as they might feel the match might be drifting. Going for his shot was drivable. It was a full toss outside off stump. And if he has pierced that gap in the short covers, it was a certain boundary. Oh, that's a lovely ball. Whenever I see him bowling, I always remember Anil Kumble. He never used to spin the ball much. He had a googlish, but this guy, Somesh, on the screens, he's also a similar sort of character, bowling just like Anil Kumble used to bowl. Lovely shot, lovely pull shot. This time, very short ball here bowled by Somesh. Most of the time, he bowls the quicker ones and doesn't get that much of turn, but little variations here and there, and that can be enough to deceive the batsman. So field changes here for Syed Badi, and to the left-hander, Sankal Prabhu. Oh, nothing short here, just trying to glide it down towards the third man's region. So good over here from Somesh Prabhu Desai.
At the end of 12 overs, is 75 for the loss of 5 wickets. Just 2 runs coming off that over. So batting power play has been chosen. At the end of 12 over, they had the option maybe to choose in the 13th, 14th or 15th over, but they have chosen that this is the time when both these batsmen are onto the wicket. The sun is also going down, so let's get as much as possible at this point of time. So shadows are coming on the ground of the trees. So at this point, if you are seeing the bowling from the railway gate end, so that entire part of the offside is covered with shadows. So little sunlight, what is there is on the leg side or towards the offside of the right-handed batsman. So Deepraj. Last over. Nicely played here at the backward of point region. There is a man in the deep. Half stop clear by the fielder in the point region. And that's always the scenario when you've got a player or a bowler like Deepraj Gaonkar. The captain always uses him at the top to bowl the first 2, then 1 in the golden over that he has done, which was expensive, and now once again in the batting power play. So these are the 4 overs that you always keep for your good bowler, just like how it was kept for Sagar Uddeshi, who took 5 wickets once again against Madhur Rising. He was kept in the golden over, he was kept in the power play overs, and then at the fag end, almost the last over, second last over. That's how the captains use the best bowler in the side. Yorker length delivery. Just hitting the inside of the leg of the big man. We have to wait for the signal. Big appeal and it's been given out. What an bowling effort here. Deepraj Gaonkar bowls quick ball, Yorker length delivery, and Vikas Desai, how magnificently he has kept today in the semi-finals. It's not easy when you are not used to keeping. It was an outside edge, fast bowling here from Deepraj Gaonkar, and I think you must give credit to the keeper there, Vikas Desai. Has been very good behind the wickets. One more wicket going down at the time when it looked as if these both batsmen are trying to slowly shift the momentum and trying to take the game away from the Curchorem Warriors. 6th wicket going down at the score of 76. So in comes Mohsin Sheikh. Well, I still remember one match here played this season in the Warriors Cup. It was the same Warriors team, the mixture of the same players. At one point of time, 8 wickets were down, and no one here on this ground ever believed that that match could have been won by the opponent side. I guess it was La Paz or Salgamkar. 8 wickets were down, and somewhere around 60 runs were required in 24-30 balls, which was hard to believe that 9th wicket
and the 10th wicket could do it for them. Nikesh Ponjikar and Ajin Kurtarkar played magnificent innings here on the same ground and got the victory. So I think they must be very well aware of that match. It's not just because you have picked up 6 wickets that a match has been won. Cricket it is. We see every new thing every other day. Something or the other is there in the news. So again, this is good bowling here. Very good bowling from round the wicket. And a stunning over, a wicket taking over. Important wicket when Buddy was trying to take the game away from the opposition. He is now back in the pavilion at the end of 13 overs. The score is 76 for the loss of 6. Just giving a single run and taking an important wicket. Sanjay Nayak, the man who had picked up 2 wickets in the very over that rocked the middle order of this team, Veling cricketers, and they could not come back from that point of time. So they have been taking wickets consistently, not allowing any partnership to grow, to blossom here on this ground. And 6 wickets down at a stage in 13 overs with 7 overs yet to be bowled. Well, anyone as a cricket lover would fancy the chances of Curchorem Warriors. But sometimes in cricket, fancy can be fantasy as well. That has to be seen here if there is any sort of resurrection rising from the ashes, just like a phoenix from these Veling cricketers, or they are going to give away without a fight. Nicely played in the third man region. There is a man and he fields it very well, Chandresh Desai. So a single taken as a lead cut towards the third man region from the left-hander, who has been playing steadily so far for his team. 2 boundaries in the innings so far. Mohsin has not scored a single run yet. Faced 3 balls, once again slashing, trying to slash hard. But if at all, I have to give credit to this man on the screens. He has taken one of the blinders, one of the most difficult and outstanding catches in this tournament. Mohsin never believed that catch could have been taken. It was an international level effort from this man who has to do the job with the bat now. He's slashing it very hard, but absolutely no connection, missing it altogether. So no moment at all at the moment. And the score, what has been posted, looking ominous, a big one. They made to look big one because of the big strike they got in the first 3 overs itself. Chance of a run out, direct hit. Well, removed his eyes off the ball, trying to see the stumps. He knows that he has immense experience. He knows the mistake is committed. Sagar Gosavi. But nothing has been given so far. No easy balls. Nothing loose at all. Not allowing the grip to be lost here. They have tightened the stranglehold. This is in the air. He's tried to slash it. The ball racing towards the third man boundary. And Bablu fielding at that point. And the fielding position, the keeping of fielding position is also important. Although the ball is new, this fielder could have been somewhere in front of the square. But know that the man here, the left-hander, is slashing the ball hard. When the ball is being slashed, it goes more towards the point region.
Oh, once again, a big slash, a wide slash. And it's been just the blow of air coming right now. Nothing of the meat of the bat. And another good over from Sanjay Naik comes to an end. And the Curchorem Warrior side are doing a pretty good job. Even whichever bowler comes in, either he picks up the wicket or either he bowls the dot balls and bowls an economical over, which further piles the required run rate up. At the end of 14 is 79 for 6. I guess Amit Amshekar and Darshan Misal's wicket in the second and third over. Score is 79 for the loss of 6. "65 runs required in 36 balls. Very much possible. So again, misfielded here. The sound of the willow feels that it has hit the bottom of the bat. Direct, it was required. Well, everyone is telling it throw at the shorter end, not at the longer end. Longer end, it is very difficult to hit. Sanjay is saying, I have that much of throw. That strong arm of Sanjay Naik. So 2 runs taken here by the left-hander. So again, still that sound is not a smooth one, not the chord that the batsman wants to hear. Getting a single, so 3 runs of the first 2 balls so far. Somebody needs to play a little cameo here. Little cameo for Veling cricketers, from where it is going to come, from which batsman. Oh, good slash. This time he plays it well. This was right in the slot and plays above the head of the short covers region fielder. Allowed the room, allowed the width. And if you want to go at the ball, go it hard way. So 7 runs coming off the first 3 balls. Score moves on to 86. मातशे जे ग्राउंडार राउंड मारतात, जॉगिंग करतात, तांकांय मातशी एक रिक्वेस्ट आसा, मातशे बॉलाचेरय नजर दवरात. This time, oh, very nicely kept here by Vikas Desai. Very nicely kept here. Maybe telling that it has hit the pad of the batsman Vikas Desai and the bowler. Batsman is telling definitely not. 9 runs coming off the first 3 balls. This could have been even more. This could have been even more. Vikas Desai certainly have saved 3 runs for his side. What a job he has done. He is not a regular keeper, but still he has done an incredible job as the captain of the side and a keeper. This is in the air, but falls in no man's land. A miscue total, but just landing at the mid-off region. Another single taken. So both the left-handers at the moment here for Veling cricketers. Trying to glide that ball, very nicely played. So far this has been a good over. Trying to be cheeky here from behind the wickets, Vikas Desai. Well, he is doing right now the 2 of the toughest job in cricket field. One is keeping and one is captaining. And definitely the man who has done it at the highest level, none other than MS Dhoni. The biggest star of Indian cricket team in the past and in the present as well. Once again, the same shot and the same result. Is going for 4 runs. I thought it might go and clear the fence for 6 runs. This has been a magnificent comeback in this over from Mohsin and also
Sankalp Prabhu. Mohsin is the one who has scored 2 boundaries, smashing and slashing it hard. And at the end of 15 overs, it's 93 for the loss of 6. 14 runs coming off this over. Still the match is alive. And still whatever little fight is there, whatever little spark is there, both these batsmen are giving it all out for Veling cricketers. So now 51 runs required in 30 balls. They need to get runs at 10 runs per over. 10 runs per over with 4 wickets in hand. I don't say it is easy, but certainly gettable. I request the umpires to please make it fast. So in comes Somesh. So last over for Somesh Prabhu Desai. Deepraj Gavkar has finished his quota with 4 overs, 30 runs and 3 wickets. Chandresh Desai, 1 over left, 1 over for Somesh, 1 over for Sanil Sawant and 1 over for Sanjay Naik. These are the bowlers that will be used here in this match. I don't think so a new bowling option will be opted at the point of juncture of time. This is in the air, this will be a catch. Fielders coming underneath, Sanil Sawant doesn't drop those. He's a safe hands, safe catcher and he takes it easily. Trying to slash it, trying to take on Somesh Prabhu Desai, who is not an easy customer to hit sixes in the mid-wicket region. So Curchorem Warriors are taking wickets once again. 51 runs required at the start of this over and the wicket has gone down. Surprised to see Tushar Sawant not bowling in this match. Very surprised. He loves this wicket here. Player of the match in the previous game has not bowled a single over. It is very surprising. So maybe a thought process here not to giving a ball at this point of time. They have got Somesh Prabhu Desai, who does the job as a spinner, as a leg spinner. Maybe the reason. Still it is clueless in my mind how he's not bowling. So 7th wicket going down. Now Tanvesh Gowde has joined Mohsin Sheikh. It's even more tougher now for Veling cricketers. It's again right in the block hole, looking to get more wickets. Just going for a single. So the start for Mohsin was not a good one with a few dot balls, but finally after scoring those 2 boundaries, he will feel much better, going hard at the ball and getting the returns. 2 boundaries so far in this innings, both in the covers region. But not easy to get this man playing short in the covers. Just going to be single at the extra cover region. And that's it, just cleaned it up. I told you it's not easy to go after this man. He bowls with lot of pace and the mistake committed by the batsman trying to play onto the back foot and the ball chopping on to the wickets and clean bowled. 8th wicket going down and whatever little left, whatever little spark will be drying up and whatever the hopes are there will be going down of this team, Veling cricketers.
Tanvesh absolutely had no clue where it pitched and where it had gone. So 8 wicket down and not looking good. So, but this wicket, when things looked very good after the end of the golden over for Veling cricketers, but when what they got out, a little hope would have dried up. Then little cameo here from the batsman Mohsin Sheikh and Sankal Prabhu. But after Sankal Prabhu and now Tanvesh Gowde departed, 8 wickets down and looking very, very precarious situation at this moment. So Curchorem Warriors, certainly the predictions at this moment will be 90-10 in favor of the Curchorem Warriors side. They have got the bowling depth. They have got the fielding to back up their bowlers. Not a single mistake committed. A small blips here and there, but not major glitches, you can say, in the field. And that's the reason why they are in the driver's seat. The score was not much as far as the total posted by Curchorem Warriors. They could have posted even 10-15 more. But at the end, they kept losing wickets, and which allowed little hope here for Veling cricketers. Once again, he's trying to slash it hard down the ground. There is a fielder. It's going to be just a single. So the match definitely well in poised for Curchorem Warriors at the moment. And looking firm favorites, holding the grip tightly on this match, not allowing any of the batsmen to get settled and get a partnership of any sort. So it will be interesting to see if a miracle happens on this ground from Veling cricketers and their batsmen, Swapnish Satarkar and Mohsin Sheikh. And at the end of 16 overs, the score is 97 for the loss of 8, and it's over to Sanket Gaonkar. नाइन्टी सेवन पर पहुंच चुका है स्कोर और इसके बाद 4 ओवर बाकी और 8 विकेट वापस भेजने में कामयाबी मिली है संजय नाइक का नए बॉलर और एक विकेट की यहाँ पर तलाश जरूर होंगे इस बार बढ़िया गति के साथ बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ सीरीज जाती हुई कीपर के पास अब ड्राइंग सीट पे हालांकि वो अब कुरचोरेम वॉरियर्स और थोड़े से बैकफुट पर वेलिंग क्रिकेटर्स जो पावर प्ले जो गोल्डन हो रहा था उस वक्त थोड़ी सी उम्मीद जगी थी सैयद बद्दी उस्ताद इस बार एक बड़ा हिट करने की कोशिश हालांकि फील्डर दौड़ लगाई है वहां पर बबलू 1 रन और दूसरा रन भी यहाँ पर मिलेगा तो सैयद बद्दी जब बैटिंग कर रहे थे एक उम्मीद वहां पर जगी थी बड़ा ओवर ये गोल्डन ओवर आया था उस वक्त थोड़ी सी उम्मीद जगी थी लेकिन उसके बाद बॉलिंग लगातार विकेट्स अपने नाम करते गए कुरचोरेम वॉरियर्स और इसी के बदौलत अब है ड्राइविंग सीट पर और ये 1 रन वहां पर और इसी के साथ 100 रन का आंकड़ा यहाँ पर छू लिया है वेलिंग क्रिकेटर्स ने 44 रन और बनाने होंगे इस मैच को अगर जीतना है लेकिन जो 8 विकेट वहां पर प्रमुख बल्लेबाज वापस जा चुके हैं इस बार अपील लेकिन लगता है कि इनसाइड एज लगी है और उसी की बदौलत यहाँ पर बचे और 1 रन जुड़ता हुआ टोटल में
इस बार संपर्क अच्छा, वहां पर फील्डर जरूर तैनात और डाइविंग एफर्ट, लेकिन तारीफ करनी होगी फील्डर की जरूर है, लेकिन चौका यहां पर रोक नहीं सके और यहां पर बाउंड्री आती हुई इस गेंद पर। बढ़िया शॉट, फील्डर वहां पर तैनात थे, थोड़ी सी दूर डाइव जरूर लगाई थी, लेकिन चौके को रोक नहीं सके और बाउंड्री के पार जाती हुई गेंद, चौका आता हुआ इस गेंद पर। 105 इस चौके को जोड़कर हुआ स्कोर। 17वीं ओवर है प्रगति पर और अब तक बढ़िया गेंदें रही थी। मोहसिन शेख का अब तक 3 चौके आ चुके हैं मोहसिन के बल्ले से और अभी भी प्रयास में, अभी भी यहाँ पर उम्मीद नहीं छोड़ी है। बढ़िया शॉट, बढ़िया प्रहार पिछली गेंद पर। लटकी हुई गेंद, थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई गेंद और वहां पर फील्डर तैनात, 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। और इसी के साथ 17 ओवरों का खेल होता हुआ यहाँ पर समाप्त। 106 लग चुके हैं बोर्ड पर 8 विकेटों के नुकसान के बाद। 3 ओवरों का खेल, इसके बाद बाकी 18 लीगल डिलीवरीज आनी बाकी और इन 18 गेंदों में 38 रन, 38 रन यहां पर बनाने हैं। हालांकि ये वैसे तो मुश्किल नहीं था, लेकिन बल्लेबाजी यहां पर 8 विकेट, जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज वापस जा चुके हैं और एक उम्मीद अभी तक भी जारी। मोहसिन शेख का 3 चौके लगाकर अच्छे टच में अब तक दिखे हैं और ये ओवर यहां पर काफी निर्णायक साबित रह गए कि कितने रन इस ओवर में आ पाते हैं, कितने रन यहां पर बना पाते हैं। 3 ओवर का खेल बाकी, 38 रन चाहिए जीत के लिए। और छठे बॉलर का यहां पर इस्तेमाल किया है विक्की नाइक का, यहां पर पहली ओवर करेंगे और ये जिम्मेदारी है यहां पर 18th ओवर, 38 रन चाहिए जीत के लिए। ये ओवर यहां पर अगर बढ़िया रहती है, इस ओवर में अगर कम से कम रन देते हैं तो आने वाले 2 ओवरों में यहां पर आसान नहीं रहेगा। ये ओवर यहां पर क्रुशियल, विक्की नाइक को बुलाया गया है बॉलिंग मार्क पर। पहली गेंद और यहां पर गैप ढूंढते हुए प्रहार किया। शुरुआती इस ओवर की कह रहा था कि 18वीं ओवर ये यहां पर महत्वपूर्ण रहेगी और पहली गेंद पर जब चौका लगता है तो प्रेशर वापस आ जाता है बल्लेबाज गेंदबाज पर। 38 रन चाहिए थे, अब 4 रन जुड़ चुके हैं। 34 और रन चाहिए, 17 गेंदें अभी भी बाकी। क्या ये मैच अभी भी बन सकता है? क्या ये मैच में अभी भी कुछ बाकी? शुरुआत तो इस ओवर की काफी बढ़िया की है मोहसिन शेख। दूसरी गेंद वहां पर हवा में गेंद और डाइविंग एफर्ट वहां पर, लेकिन ड्रॉप, दूसरा रन और दूसरा रन भी यहां पर आसानी से मिलेगा। तीसरा रन क्या यहां पर लेना चाहते हैं कि जी नहीं। डाइविंग एफर्ट वहां पर तुषार सावंत का, लेकिन कैच नहीं कर सके, उसी बीच 2 रन। तो पहली 2 गेंदों में यहां पर 6 रन बने हैं और प्रेशर यहां पर होगा गेंदबाज पर। ओ ये यहां पर कड़क शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद सोमेश प्रभुदेसाई जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी आज रही। बैटिंग में भी कमाल का प्रदर्शन, ऑलराउंड परफॉर्मेंस आज रहा सोमेश का और फील्डिंग में भी अपना योगदान देते हुए इसी के साथ और 1 रन जुड़ता हुआ टोटल में। इस बार पटकी हुई गेंद और यह भी गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार।
और ये मैच यहाँ पर कुछ एक नया मोड़ यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता हुआ। 14 गेंदों में 27 रन। ये ओवर यहाँ पर बड़ा ओवर, 11 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। अभी भी 2 गेंदें बाकी। विकी यहाँ पर प्रेशर में 4 गेंदों में आ चुके हैं 11 रन। इस बार पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार पड़कर थोड़ी सी नीचे रही और यहां पर और एक शॉट लगाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन इस बार ये बढ़िया यहां पर थोड़ी सी राहत मिल हो चुकी होगी विकी को। एक डॉट गेंद यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी 2 चौके आ चुके हैं, 11 रन इस ओवर में आ चुके हैं और एक यहां पर बाउंड्री नहीं देना चाहेंगे विकी। इस बार यहां पर हवा में गेंद, वहां पर सोमेश की यहां पर बढ़िया फील्डिंग और 9वां झटका यहां पर देते हुए कुछ उम्मीद इस ओवर में जरूर जगी थी। 11 रन जरूर आए थे, लेकिन विकी की इस आखिरी गेंद पर विकेट और इसी के साथ 9वें विकेट का पतन यहां पर होते हुए। और इसी के साथ 18 ओवरों का ये खेल यहां पर होता और समाप्त। 117 लग चुके हैं बोर्ड पर 9 विकेटों के नुकसान के बाद। तो अभी भी 12 गेंदें बाकी। आखिरी जोड़ी मैदान पर 27 रन चाहिए जीत के लिए, लेकिन यहां पर ये इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि संजय जिन्होंने अब तक कमाल की ये गेंदबाजी रही है, कमाल का प्रदर्शन आज रहा है, और आखिरी जोड़ी यहां पर 27 रन 12 गेंदों में बनाने हैं। आखिरी 12 गेंदें इस मैच की। मोहसिन शेख का अभी भी 1 मैन आर्मी यहां पर फाइट दे रहे, कोशिश जारी अभी भी। पटकी हुई गेंद थर्ड मैन की शाम में गाइड करना चाहते थे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। एक ही रन यहां पर मिलेगा और एक रन जुड़ता हुआ टोटल में 18 118 इस एक रन को जोड़कर हुआ है कुल स्कोर। सर्वेश कुंकड़कर पहली गेंद यहां पर फेस करेंगे संजय नायक। बढ़िया ये गेंद पड़कर सीधी जाती हुई विकेट कीपर के पास, और विकास देसाई वहां पर मौजूद। बढ़िया कीपिंग आज रही है, कई सारे एज लगकर विकेट के पीछे गए थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच पकड़कर एक बढ़िया ऑलराउंड परफॉर्मेंस आज रहा है कुरचरेम का। इस बार पटकी हुई गेंद, हालांकि शॉट तो अच्छी थी, एक रन यहां पर जरूर मिलेगा। तो यहां पर 1-1 2-2 यहां पर ज्यादा कुछ खास परेशानियों का कारण नहीं है कुरचरेम के लिए, और चौके छक्के अगर लगते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, लेकिन संजय की ये सटीक यहां पर गेंदबाजी सटीक लाइन और लाइन के साथ अभी भी बांध के रखा है, अभी भी कोई रोम नहीं। फिर एक बार वहां पर हवा में गेंद, फिर ये डाइविंग एफर्ट वहां पर, लेकिन चौका नहीं रोक सकेंगे। और ये बाउंड्री यहां पर जरूर आई है, लेकिन एफर्ट वहां पर बढ़िया था, डाइविंग एफर्ट, कैच पकड़ने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन हाथ में नहीं आई, और उसी के साथ बॉर्डर के पार जाकर एक 4 रन और जुड़ते हुए टोटल में। फिर एक बार ये बढ़िया अपील जरूर, लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट का, और दूसरा रन भी यहां पर लेने की कोशिश, और उसी कोशिश में यहां पर कामयाबी मिलती हुई। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, अपील जरूर बड़ी हुई थी, लेग बाय का इशारा आता हुआ।
अभी भी प्रयास जारी, अभी भी मोहसिन शेख का अभी तक मैच नहीं छोड़ी है, अभी भी यहां पर कोशिश जारी। अभी भी 7 गेंदें बाकी, 19 रन चाहिए जीत के लिए। ये गेंद यहां पर बहुत ही जरूरी, क्या इस गेंद पर सिंगल लेना चाहेंगे, क्या बाउंड्री के लिए जाएंगे? 19 रन 7 गेंदों में है बनाने। इस बार आई नहीं, संपर्क उतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी 1 रन यहां पर जरूर मिलेगा। इसी के साथ 19 ओवर का खेल वहां पर होता हुआ समाप्त। 126 लग चुके बोर्ड पर और आखिरी 6 गेंदे बाकी, 18 रन चाहिए। तो एक यहां पर प्लस प्लस पॉइंट मोहसिन शेख का अंत तक यहां पर मैच नहीं छोड़ी, आखिरी विकेट जरूर यहां पर मैदान पर है, लेकिन क्रिकेट जब तक आखिरी बॉल आखिरी डिलीवरी यहां तक नहीं होती तब तक का रिजल्ट नहीं कहा जा सकता। और 18 रन यहां पर बनाने हैं, आखिरी विकेट यहां पर मैदान पर खड़ी, फिर भी मोहसिन शेख की यहां पर तारीफ करनी होगी। क्या यहां पर कौन गेंदबाज इस आखिरी ओवर का जिम्मा कप्तान ने सौंपा है? विकी। तो 18 रन यहां पर मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन मोहसिन शेख का किस तरह का अप्रोच रहता है, किस तरह की यहां पर बल्लेबाजी रहती है, क्या पहले गेंद से यहां पर शॉट के लिए जाएंगे? 6 गेंदे बाकी, 18 रन चाहिए जीत के लिए। तो दोनों ही टीमों पर यहां पर प्रेशर, क्योंकि इस आखिरी ओवर पर सारा दारोमदार इस टूर्नामेंट का कि कौन फाइनल में यहां पर प्रवेश करेगा, कौन फाइनल खेलेगा जिनो क्रिकेटर्स के सामने। पहली गेंद बढ़िया गेंद और डॉट के साथ शुरुआत की इस ओवर की। सारा सपोर्ट, सारा यहां पर प्रोत्साहन मिलता है विकी को, और पहली गेंद डॉट के साथ इस ओवर की शुरुआत। और अभी भी 5 गेंदों में चाहिए 18 रन। ये कमल का शॉट, पीछे प्रोटेक्शन मौजूद, सनेल दीवार की तरह वहां पर खड़े, और एक ही रन इस गेंद पर मिलेगा। तो अभी भी 4 गेंदों में 17 रन। तो विकी 4 गेंदें आखिरी इस ओवर की, इस मैच की बची। पटकी हुई गेंद हवा में, जरूर गेंद वहां पर सनील, और क्या ये आखिरी विकेट। और इसी के साथ फाइनल में प्रवेश किया है कुर्चोरियम वॉरियर्स ने। बहुत ही बढ़िया ये प्रदर्शन, हालांकि स्कोर सिर्फ 143 143 बनाए थे। और ये बड़ी यहाँ पर जो बैटिंग लाइनअप वेलिंग क्रिकेटर्स के, तो वहां पर ये का बड़ी क्रिकेट, बड़ी यहाँ पर क्रिकेट खेले आज लाइनअप थी। और हर पहले बॉल से विकेट की दरकार दीपराज गांवकर, हालांकि बैटिंग में ज्यादा कुछ कर नहीं सके, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कप्तान ने उसका इस्तेमाल किया, लगातार हर एक ओवर में विकेट अपने नाम करते गए, उसी की बदौलत ये मैच यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ये आज खेल कुर्चोरियम वॉरियर्स का रहा, उसी के बदौलत फाइनल में प्रवेश किया है। और दो टीमें आज यहाँ पर फाइनलिस्ट जिनो ड्रैगन्स वर्सेस कुर्चोरियम वॉरियर्स का मैच संडे को होगा, और इसी मैदान पर
तर आमकां हांगा प्रमुख पावड्याचे हे प्रेझेंटेशन सेरेमनीक विराज नागवेकर एडवोकेट हांगा लाभल्यात आनीक एक बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स बॅटींग जेन्ना कॉलेप्स जाताली तेन्ना एक बऱ्यांतलो स्ट्रॉंग परफॉर्मन्स 42 रनाची इनिंग आनीक त्याच बरोबर 17 रन दिवन 2 विकेट आपली नावार करून सोमेश प्रभुदेसाय हे मॅचचे मेन ऑफ द मॅच सेमीफायनलचो हो सामनो आनीक बऱ्यांतलो बरो ऑलरावंड परफॉर्मन्स मागता सोमेश प्रभुदेसाय आपले मेन ऑफ द मॅच जे सांगेन कलेक्ट करचे. विराज नागेकर आमच्या हांगा उपस्थित आसा प्रमुख पाहुणे आज प्राइज डिस्ट्रीब्युशन सेरेमनीक. सोमेश दोन शब्द. आयज एक इम्पॉर्टंट मॅच आयज मॅच जी आसा ती एक ऑलरावंड परफॉर्मन्स सो मॅचीची पयली ही मॅच जी आसा ती कितली इम्पॉर्टंट आसली आनी कशी तयारी जी आसा आयज मॅचीची जाल्ली. तशें कांय तयारी बी कांय नासली आउटस्टेशन सो खेळपाकूच जाय आसलें सो आउटस्टेशन म्हणून 2 मॅची कांय करूं ना हांवें आयज खेळपाक एक मेन इम्पॉर्टंट मॅच आसली सो ती खेळपाक जाय आसली. सो एक सायडीच्यान विकेट पडटाली आनीक तूं जेन्ना बॅटींग करपाक देंवल्लो सो एक आक्रमक 42 रनाची इनिंग सो तुका विकेट्स वाचोवपाक जाय आसले आनीक रन काडपाक जाय आसले सो त्या टायमार कितें विचार आसले तकल्यान. ना हांव चिंततालो बाद बॉल पडले तेच स्कोर करतलो कित्याक इजी येनाले बॅटार ते बरे बॉलिंग बरी घालताले लायन इन लायन घालताले सो डिफिकल्ट आसली. सो वो जेन्ना गोल्डन ओवर जेन्ना जाल्ली तेन्ना मॅच जी आसा तुमच्या हातींतल्यान पयस वयताली 32 रन त्या टायमार जे आसले एक ओवरीक टोटल जाल्ले आनीक तेन्ना एक बरी तेंची पार्टनरशीप जाताली सो तेन्ना तुमचे प्लॅनिंग किंवा तेन्ना तुमचे विचार कितें चलताले कारण एक बरी विकेट तुमी काडलेली तुमची हातीन आसली मॅच आनी एक टायम येयलो एक गोल्डन ओवर सो तेजे फाटल्यान आनी मॅच जी आसा ती खंय तरी पयस वयताली सो मागीर कशें हँडल जालें किंवा कशी परत मॅच जी आसा तुमची हाडली. तशें कांय ना पयली विकेटी बऱ्यो मेळ्ळ्यो आनी मागीर एकूच विकेट जाय आसली आमकां की आमकां खबर आसलें मागीर रन करपाक इजी ना बदीची एक विकेट मेळ्ळी तेन्नाच्यान गेम चेंज जाली परत. ओके कॉंग्रॅच्युलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फायनल्स.